Muted. Good morning, Bhajan. Based on pressure.
Okay. Sorry, over here, करो. आपको मैं वो उसको ओवरव्यू लगा देता हूँ क्लॉक नो प्रॉब्लम अभी मैं नहीं पुराना तो वो रिकॉर्ड होके इनकोड होके अपलोड हो जाए बहुत मुश्किल अगर उन्होंने कोई ओपनिंग स्टेटमेंट दी है कि गुड जिस तरह मैं देता हूँ गुड मॉर्निंग 9 o'clock फिर आज से शुरू कर सकते हैं कल से लेकिन पुराना तो इनकोड होके चला गया नो प्रॉब्लम मैं भी जुनेद भाई का टेस्ट करता हूँ
All right, guys, sorry. Came in. Trying to get this fixed. Okay. Let me just. All right, good morning, everybody. Wednesday, September 17, 9:13 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SuperAreas.com. Thank you for coming in person as well as online. Morning. So, what is the schedule? The schedule is as follows. Building permits are down, housing starts are down. Market is still up at 2 p.m. So today just sit and don't do anything. Honestly, just watch and enjoy your day today. Literally, there's nothing to do except to wait. Market may move up and down. Who knows? Maybe 25,000, maybe 23,000. Who knows? So just sit, relax, enjoy the day, enjoy the commentary of other everybody else. But I don't have a plan right now. Until I will listen to Daniel's brief, and then we'll go in and try to dissect the situation one tick at a time. Anything I say is informational, educational, entertainment purposes. It's not financial advice at all. I have my own plan set out. I'm working on a couple of strategies to make a few things automated. So I don't have a trading plan today until 2 p.m., 2:30 p.m. because market could slip 1,000 points or could go up 500 points. We are in the record high. I will still look at the areas right now, let it boot up. So what is the night highs and lows? Let's take a look. The night high, 24,553. 24,553. Low, 24,450. So 100 points, not much. 456. So 197 point. Where are we right now? 520. So very close to R1. If you want to listen to me, go set at 25,000 or 24,000 at 800 at minimum, because interest rate, this is one of the biggest news that's going to be coming out today. Everybody's highly anticipating. Of course, they already know what the decision is. We just sit and wait as a retail investor. So, and I just, if you don't want to blow your account, stay away from the market. All mid bands until 2 o'clock, things will be okay, but maybe it'll be slow. But why risk? What's the point? This tomorrow, come back with a fresh day, and we'll assess the situation tomorrow. So losing $0 is, better than losing even $1, right? So what's the point? Sit down, relax, don't trade, save your PAs. If you want to pass evaluation, yes, today is the day. 2 o'clock, 2:30. If you want to risk $25, pick 4 NQs, 4 ES, and just close your eyes. And Apex, you can hedge. You can go one long, one short. If you want to pass bull longs, that's the only company that lets you hedge in evaluation. Every other company will deny you payouts in. This is the mother of all news. Maybe set at below S4 and above R4. So that's the plan. So I'm continuously going to be working on the strategies until 2 o'clock, and then we'll see how it goes at 2. So I'll run the stream a little bit longer, but let's see. So maybe you want to get into ES, take some ticks, bottom of the bar, couple of points up and down, mid bands, SRES trades, gap trades. These are the scalping trades for you. But base is down, pressure is up.
So, and same thing, I think you have, yeah, base down, pressure up. Where the rest of the markets, NASDAQ and ES is sync. Dow is in between R1, S1, close to R1. Russell is close to R1. ES is between R1, S1, and NASDAQ is between R1, S1. So sit, relax. If you're looking at EA evaluation, go nuts. It's up to you. But if you already have filled your evaluation to a point where you have less, so today is not the day you take risk. So today is the day you just simply sit. Any promotions on evaluation? Good question. Bullnog says promotion. It's 83% off for $29. I believe it's for $29. Legends is giving you direct to PA. Apex is 80% off. Take profit is $90. So it's the standard, nothing crazy. No major 90% off, nothing like that. So all these companies. So today is just watch and observe, as a lot of accounts are going to be blown if you go into this hurricane. Like $6 to $7 trillion about to move, minimum, maybe more. And your 1,500, 2,000, 5,000, 100,000 has no value today. Just saying, not that I have a disrespect on any account size, but don't go outside. It could be a landslide. And, at the end of the day, could actually nothing happen as well. It could be a hype, right? So, but what am I working on? I did not sleep last night at all because I was working up, because all mentors are getting a tool where they'll be able to put a trade on their system and it'll automatically come on your Ninja. So you will just pick the mentor, you'll pick who do you want to follow, Murtaz, Harneet, Tulip, myself. So if I place a trade on my Ninja right here, you will automatically. So yes, you're gonna have to go with the flow if you want to pass it. Yeah. So if I'm showing you, it's a free service for now. We're gonna bring you, so you just can tag along with any mentor and whatever their orders are going to be. So if they move a mouse here, not a mouse. I mean, if they put an order in, if they put a stop loss, if they put a TP, and of course, you're gonna have to follow which mentor it is, how they're doing it, and now everybody Premier knows that most three markets are really the top three for us: Nasdaq, ES, and gold. But if I have to teach you how to do a buy stop, sell stop, so this is the tool we're introducing for remote learning and kind of. So if I have to say, all right, I'm going to place an order on mid band, and if I go and click on mid band, it will automatically appear on your Ninja as well, as long as you have the gate open and you have allowed. We so you do if you want to yes, you will need a copier to tag along if you want to. Let's say you can only take your order on one account, and if you want to take that on multiple accounts, then open Flowbot to be able to send that to. But one account, you can have one trade coming from me, one from Junaid, one from Vikram, no problem. But how are you gonna follow it all? That's up to you. But you can open 5 charts and you can open, but hopefully I'll have a prototype working, because my goal is like tonight I have a class for new users at 6 p.m. to 8 p.m. Eastern. So if you want to come along, tag, you have questions, I have answers. So this is a free Q&A based class at 6 p.m. Eastern today, 6 to 8. And because we have a lot of students who joined with the last seminar, and they're going through some of the first batches, like a program, and we'll see. So let's do one step at a time. Let's get the signal sent to your Ninja. That's the first priority.
and then we'll test it how good they are. If I put an order at 6665 and you get it at 6666, that's not good. So trying to be as instant as possible. So yes, you do need copier. So let's say if you're incoming receiving a signal on SIM account and you want to send it along to other accounts, you will need a copier. $129 one time, lifetime. So okay. So if I have to show you how the three candle rejection works or all of these things, that's yeah, I'll explain you how trades will sync. First, we have to make sure it works. So if it doesn't work, all of that is useless. If there is, let's say, I think last time we managed to get up to 20 people in sync, no problem. But let's see. This is new version that I'm writing myself rather than relying on third party. So I think I've gotten the speed figured out. Just have to figure out if there's a slippage on any of this. So because the whole idea of this is when I'm doing a class for 20, 30, 40 people at night, and I have to show you, then I can say, guys, everybody open their Ninja and then go set up the charts the way I have mine. You guys can come along and see how I place my orders. So, for example, right now, I want to do a bottom of the bar trade. So, bottom of the bar will be somewhere around right here. So, if I go over here, 1510 bottom of the bar with 9 tick stop loss, I believe my stop loss is 9. Because 19 tick is the, so let's just rename, let me rename this 9 to 4. So this is called the bottom of the bar trade. So I go at the bottom, I place my trade, buy limit. So what am I doing here? So if that trade happened so I placed the trade, if you see on my live screen, so that is due. That's my first priority. We're putting a program together for some expert, little bit experienced user, ES program. I posted in my status that we're gonna teach a strategy, a very, very precise strategy soon. So lots of things. Majid Bhai is still not feeling well, so he's still. Today's trading would be online. It's not in. It's not in person. It's online. All the training for today, 6 p.m. to 8 p.m. is um, virtual. All right. Waiting for Daniels to start the brief. Crude oil has gone to November. Just crude oil has changed to November. Gold made a high of 37.39. Okay. All right. Daniel's going to start his. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Good morning. Manish, Tamur Bhai, Vikram ji, good morning. Abbas Bhai, Sunil ji, good morning. Amir Lal ji, good morning. Manpreet ji, Rizwan Jagdeep ji, Chaisab, good morning. Majid Samir, good morning. Thank you, Hikesh, thank you. Sandeep, good morning.
Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our trading floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decisions, but not make it for you. And we take no responsibility for any action taken by any subscriber. And always place your stops and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on SuperAreas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility at all for any action taken by any subscriber. Today, S&P 500, NASDAQ, Russell 2000, Dow is above PP, but almost two markets, NASDAQ and S&P. Base is down, pressure is up. Base is down, pressure is up. Very, very important day. Already, if you see the two numbers are out, building permits and housing start, both are not good. Red to go up and green to go down, but it's red. The prices are already overbought. It's a hugely, extremely overbought. And today, 2 p.m., we'll see the interest rate. They're expecting 0.25, but in my experience, they should cut 0.50. And if they're cutting 0.50, first we'll see a push to the upside, and then a big push is coming to the downside. And also contract renewal. Only 2 days left with the old contract, so they will close all the trades by 1 o'clock Friday, 1 p.m. So anybody who's in September contract, you have to prepare yourself to get out from the trade. And other FTX and crude oil, you must change your contract, guys. Everybody, crude oil is November 25 and FTX is December 25. S&P 500, our high for the day is 66.93 to 67.05. Our low for S&P 500, 66.28 to 15. NASDAQ, our high is 24.650 to 720. Best is high to go low. And NASDAQ low is 24,300 to 230. And if you look at night push for our S&P 500, actually it was dead flat, and then after Euro session, 4 o'clock, it came down, and NASDAQ and S&P hit our S1 area and nicely bounced back up, open above the mid-range, so testing night session high. S&P, Dow is banana. If you look at the Dow, very strong. Dow is going up R2 area, and S&P 500 is going up. That's why the base was down, pressure is up. And it's definitely first push we'll see to the upside and then push to the downside. Minimum, I'm expecting 70 to 80 points range today. 70 to 80 points range after the news. But overall, right now, if you look at the Russell 2000, also breakout night session high. NASDAQ should test our night session high. Somewhere 553, area 550. Actually, R1 should be tested. If you see right now, just kiss R1 and shoot to the downside, S&P 500. 4 points right now, it's a big deal today. If you can get before the news, if you hit the area, and 74, it just kissed 74.25 and push to the downside. So today, the best is any area, just hit and run, and then enjoy today. Even you don't need to do anything. Do everything after 6 p.m. If me, I will do anything after 6 p.m. today. And then our Euro session, our British pound is just dead flat. Everybody's waiting for interest rate to come. If you look at the British pound, and then Canadian also, we have interest rate today. So Canadian dollar, if they cut the interest rate, definitely Canadian dollar will go down. We might see our expected low for the day. And right now, if you see Canadian dollar below PP, British pound is dead, guys. Nothing. It's just sitting at PP, not doing anything. And Canadian dollar is coming down. Yesterday went to our expected high for the day. And from expected high,
retrace back down 25%. So right now, just 25% push. I'm expecting somewhere 800, 72, 800. This is what I'm expecting for Canadian dollar. The cut interest rate, remember, US dollar is weak, Canadian dollar is weak, and all other currencies will get strong. And then euro, exactly sitting at PP, not doing anything, dead flat, not doing much in the value area, but after 2 p.m., we'll see if euro goes up because the US dollar will get weak. And then we have crude oil. Crude oil yesterday went to our expected high for the day, came down 48%. It went up $1.87. That's a humongous push to the upside. $1,870 if you put just one lot. But people are not waiting too long. They just get in and take 30, 40, 50 cents. And that's enough push. And right now, above PP in value area, so new contract, remember, we are not trading in October contract. It should be November 25, guys. And FDAX, very close to our expected low for the day. FDAX very close to expected low and and in a diversion. Expected low and diversion. And then we have gold. The gold is bouncing back from S2 area. Our base is down, but gold is pushing up. Base is down, gold is pushing up. Right now, in between PPI, it will hit somewhere 37.21 to 24 area, where the PP is and low of the value area is in exactly same. Look like they're mirror copy our silver. Silver very nicely went down, went to our expected low for the day, and from our expected low, right now it covers up 80% push that we had to the downside, and it covers up our that push, 80% push to the upside from the low, expected low. So remember, silver, our expected low for the day is done. Interest rate cut, both gold and silver and copper, all these markets will go up. We might see our expected high for the day today. And then natural gas above PP, above value area, we are in a diversion to the downside, but upper band right now sitting at upper band natural gas. Natural gas further, imagine November, December, January, everything is pushing up. So we'll see if somewhere $4 plus. Then Bitcoin is down. Bitcoin break the night low, and right now extension to the downside. So now we have an extension to the downside, very nicely pushed to the downside. And the same thing with the Ethereum. Ethereum is also pushing down. If Bitcoin goes down, and Ethereum will follow, but right now Ethereum is sitting at below PP, but not much movement. Just, I would say, it's in consolidation. Other thing again, guys, that today, just enjoy. You don't need to do any trade. The best way is to stay away from the market and do anything after 6. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. All right. Those looking for yes, R1 is done officially. So R1 got done. So if you took R1, you took points, you're done.
NASDAQ heading to S1 and ES is done R1. This is 9 inches. This 9 inches. Okay, price came to mid-band. Now expected at the point. पहले ही चलेगी. Oh, 3 point. blink of an eye. So mid-band is worked. There you go. Mid-band gave you so far a point or so. Six, 3 inches. There you go. First mid-band. So how many I need? 1. Well, he's right. Dow's gone up quite a bit. 46. Dow just shot up to expected high from R1 all the way up. Let's see if the other indices go along with Dow or. ES is in a bit of a divergence, 30-20.
My video audio seems okay. I don't have any concerns. Everything is fine. $30.20. It's touching mid-band. NASDAQ is inside S1, guys. So very just kissing S1. 470. हाँ जी बिल्कुल सर सर कौन से अकाउंट में चल रहा है कौन सा लेना चाहिए बुलनॉक्स 83%, एपेक्स 80 पे लेकिन यही आगे जब हम ये करने के बाद जब ये करेंगे तो इसमें भी कौन से बेटर जैसे मैंने सुना था कि कोई सिर्फ टेक प्रॉफिट टेक Take प्रॉफिट में अभी वन टाइम ही है वन टाइम अगर 1 मंथ में कंप्लीट किया तो $90 में आपको पीएम ही दे रहे हैं अच्छा, 90 यस तो अभी जो अकाउंट है वो $90 है यस अच्छा उसको लेके कंडीशन है कि 1 मंथ पे करना है हम्म 1 मंथ में करना पड़ेगा यस तो आपके हिसाब से बेटर वही रहेगा टेक प्रॉफिट मैं तो अभी प्रेफर करता हूँ टेक प्रॉफिट दी बेस्ट तो अभी लोगों के आ रहे हैं क्योंकि काफी टाइम हमने भी करके देखा पैसे आए सर मैं कल लिए मैंने एवरी डे लेता हूँ नहीं जो फॉलो नहीं करेगा वो तो 100 साल भी लगा रहे तो नहीं आएंगे अब अंदर जुनैद भाई हैं माजिद भाई हैं हरनीत है रोज के 200 बनाए निकल गए अब जिसने R1 से लिया 4 पॉइंट लेके चला भी गया तो आप एक सिस्टम पकड़ लें तो मसला नहीं है तो उसका ऐसा तो नहीं कि एक दिन में मैं इतना ही करना नहीं कोई टेक उसका प्रॉफिट का कुछ नहीं टेक प्रॉफिट 30 डेज में आपको 1500 बनाने हैं अच्छा 30 बस days that's it तो और ये जो अकाउंट है कितने अमाउंट का है 1500 वाला तो 25,000 को 26,500 करना है ना तो 1500 बनाने हैं 15 दिनों में बेसिकली 20 दिनों में तो रोज के 100 भी बनाए तो 20 दिनों में हो जाता है तो 2 पॉइंट डेली चाहिए पास करने के लिए जी जी और फिर उसके बाद फिर हम जैसे पैसे जो हुआ उस पर रेट में निकाल सकते हैं बिल्कुल तो सबके नो प्रॉब्लम डेली पे आउट है टेक प्रॉफिट टेक प्रॉफिट कहने का तो आज की दर ये बेटर है इस वक्त सबसे बेस्ट तो अभी उसमें टेक प्रॉफिट में कितने का $90 90 ये अभी नहीं है अभी पहले 80 का हुआ था लेकिन फिर वापस 90 हो गया लेकिन 90 से नीचे है कोई नहीं तो इसका क्या चांसेस लगते हैं आपको कि क्योंकि मुझे भी लेना था अभी ना अभी नहीं नीचे नहीं लाएंगे अभी क्योंकि कोई बड़ी हॉलीडे आ जाए ना हॉलीडे के अब क्रिसमस लगाते हैं या लेबर डे लगाएंगे या फैमिली डे लेकिन 80% तो रोटेशन में चलता ही है 80% तो होता ही ठीक है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम 30-20 mid band is being tested right now. If you took 67, you are done your 30-20 mid band. All right. My stream is okay. $30-20 mid band, 100% worked. Came from an area 1510. So if you took 6, 6, 6, 7, so 2 trades are kind of done. R1 done, 30-20 mid band done, and now it's heading back up.
Dow is expected high. SRES is building on 1510. So let me go back and I'll be a little quiet. I'll try to come up with a way to play music for you guys, maybe. So NASDAQ S1 is done. S1 NASDAQ done. We do have all-time high for ES 6697. So you never know. You may see 7200 today or 6500. Who knows? 24,650 is the high. All right, Bank of Canada has cut it by 2.5. Divergent. Yeah. ES is in divergence now on 3020.
Another mid-band worked, 1510. Gap trade on ES 3020. For the remaining streams, clocks are going to be added to their screen starting tomorrow. Look at ES 30 minute. Complete doji. Complete empty candle.
Divergence on 30-20. All right. Yes, FM NASDAQ is heading towards S2. Go to right now bottom range of S1. जी सर आ जाए इसमें टेक प्रॉफिट में अगर हम ये करते तो कितना 5 दिन में करना है कि कभी नहीं नहीं 5 दिन मिनिमम पूरे 20 दिन ओके और उसके बाद बीए का ये तो कोई टाइम लिमिट नहीं है तो वो उसमें ये होता है कि एज अर्ली एज 1 डे हो जाता है मीनिंग कि अगर आपने एक दिन में पीए कर लिया तो नो प्रॉब्लम तो कभी भी कर सकते हैं यस यस तो बीए करने के बाद फिर वो उसके बाद फिर वो स्टार्ट हो जाता है हाँ देखें मैंने कल ये लिखा था ये आप इमेजिन करें ना ये आपने $90 पे किए आपको आपके पास 1 मंथ है ये आपने पूरा 1500 भर दिया आप पीए में गए फिर 1500 भरा तो एनीथिंग ओवर दीज टू अमाउंट्स इज योर पे आउट्स तो इसमें आपके पास 30 दिन है $90 इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं मीनिंग आप इसको 1 मंथ में करें 10 मंथ्स में करें तो इसको स्लो एज फास्ट तो जैसे ही अब कल एक स्टूडेंट आए उन्होंने एक पहले खरीदा ये कल की सिनेरियो था यहाँ बैठे हुए थे $90 स्पेंड किए फिनिश कर लिया फ्री क्रेडिट मिला ये फिनिश कर लिया ये उन्होंने 2-3 दिन में कर लिया उन्होंने 450 उनका जब बैलेंस 1950 हो गया कल उन्होंने विड्रॉ कर लिया ठीक है अब फिर उन्होंने 4 और खरीदे कॉपियर के साथ कॉपी कर रहे तो अभी आपके पास राउंड 1 राउंड हाँ जी पहले हमने काफी सारा टाइम इसके पीछे आपको बताया कुछ पैसा कुछ गोइंग डाउन तरीके से करें पढ़ने भी पसंद आया ये सब किया पढ़ने भी जाता बस के आगे में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन आई अंडरस्टैंड देखें मैं आपके हम ये जो दूसरा फ्लोर है ना स्पेशली इधर तो मुझे नहीं मालूम मैं तो आज इधर आया उधर से हाँ मैं जुनैद भाई अब 7 स्ट्रीम में लाइव जा रही है मेरी भी और 6 और स्टूडेंट्स की मेरे मेंटोर्स की जुनैद भाई इस माजिद भाई 3 मुर्ताज है हरनीत है ट्यूलिप है हैप्पी है विक्रम भाई रोज के स्टैट्स देखे ना हमारे तो रोज आता है कि 2 पॉइंट डन बन 2 पॉइंट डन तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या $100 कमाना मुश्किल फिर मसला कहाँ आ रहा है एक देखिए अगर तो आप कहें नहीं यार मुझसे 100 नहीं बनता तो मैं और आप सीरियस टॉक करेंगे कि यार 100 क्यों नहीं बन रहा अब मेरी कमेंट्री में 6 ट्रेड आए हैं इधर मैंने जो सुबह से देखा मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं इंटरेस्ट रेट का वेट कर रहा हूँ प्राइस ने कहाँ जाना है लेकिन पहला ट्रेड था प्राइस गई R1 वहां से नीचे आ गई 2 मिड बैंड चले 30-20 का डाइवर्जेंस चले अभी 10:05 हो गया मेजोरिटी पिक्चर्स वगैरह भेजे हैं $85 डन $100 डन हमारा टारगेट क्या है $100 पर डे अगर आप निकाल सकें आप $10,000 पर मंथ पे जा सकते हैं अगर $100 एवरी डे निकालना होता ही है कि मेजोरिटी ट्रेडर्स आते हैं वो 500 करते हैं फिर 700 करते हैं फिर 200 और फिर वो तो जिस स्प्रिंग की तरह ऊपर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं तो वो बना रहे हैं वापस दे रहे हैं बना रहे हैं वापस दे रहे हैं एक थोड़ा ट्रेड और एक और आप लोगों ने फास्टेस्ट गोल्ड कर लिया था मुझे आज भी याद है राइट वो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से पैसे वापस हो रहे हैं आज भी अगर किसी ने R1 से लिया और 2 पॉइंट भी ले लिए तो डन दैट्स अगला ट्रेड प्लान कर लेना मैं यहाँ बैठा हूँ आज का तो डे इतना मुश्किल है कि आई एम वेटिंग फॉर द टाइम टू गो टू कि यार इसने कहाँ सेटल होना है तो लेकिन अगर आप सिर्फ 14-15 डेज कंसिस्टेंटली से $100 बना लेना एवरी डे आपका अकाउंट पास हो जाता है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है आपको डर लगता है मिनी में माइक्रो में आ जाएं 2 माइक्रो में आ जाएं 3 में आ जाएं 5 माइक्रो में आ जाएं लाइक सो लेट्स असूम
अब कहते हैं यार मैंने 1500 का अकाउंट लिया। प्लस उसमें बैकग्राउंड उसमें भी कैलकुलेशन जो बेसिक हमारा है ना। हाँ भाई देखें, मैं कल भी किसी से बहस कर रहा था कि डैनियल ने 2008 से ये सिखा रहे। अगर आप अपनी पहली क्लास याद करें, उन्होंने आपको एक ट्रेड ही बताया 2008, और अब ये 2025 में सैटरडे को भी क्लास हुई है। अगर आप देखें 4 क्लासेस में उन्होंने सिखाया क्या, चेक द न्यूज। देखें, अगर मैं सब कुछ बुला दूं कि आप इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, चेक द न्यूज। ग्रीन पे बुलिश लिखा हो, मिड बैंड पे ट्रेड डालें, 2 पॉइंट लें, बाहर आ जाए। रेड पे बेरिश लिखा हुआ 2 पॉइंट। तो 3 स्टेप्स आज भी याद हैं जो मैंने 4 साल पहले लिए थे। चेक द न्यूज, रेंज एंड बेस फॉर द डे। रेंज होती है नाइट लो एंड हाई। बेस क्या है, पिवट से ऊपर खोल रही है, नाइट पे हाई पे जाना है, पिवट से नीचे खुल रही है, नाइट के लो पे जाना। तीसरी चीज है उनका होता है बाय टू ओपन सेल टू क्लोज, अगर ग्रीन है, सेल टू ओपन बाय टू क्लोज। अब इस चीज को छोड़ के 15 और स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं डाइवर्जेंस भी ट्रेड, आपने लिया टॉप ऑफ द बार ले लिया, वो मतलब एक भी नहीं कर पाता। तो वेरी रिस्पेक्टफुली उसमें मसला इंडिविजुअल में एंड में 2 चीजें आ जाती हैं। एक ये है कि आप मैनी स्ट्रेटजीज ट्राई कर रहे हैं, आप ये ट्रेड भी लेते हैं, होता ही है। और दूसरा ये है कि ओवर ट्रेड हो जाता है। चलिए मेरे से हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें अकाउंट जो है, अभी तो आप लोगों का बैच इतना लकी है क्योंकि इसमें फंडेड है। जब मैंने ज्वाइन किया था सारा काम रियल पे था। आप एक ट्रेड भी आपने डालना है ना, आपने 4 दफा सोचना है कि यार माइक्रो लूंगा तो इतने का रियल लॉस है। मीनिंग कि अगर 2 माइक्रो भी लिए और आपको, क्योंकि अब नया नया आप पाते हो, तो अब तो इतना इजी है कि $90 की इक्विवेलेंट 1500 मिल रहा है। सो सिर्फ और सिर्फ इसमें यही ध्यान होता ही है कि वो 90 बंदे को लगता है ना यार क्या वो 90 गए ना, वो ऐड हो जाते हैं 90 प्लस 90 फिर 90। तो वो ये ना हो कि पता लगे 1500 लगा दिए। नहीं, अगर आपको रेडी है, देखिए रियल में भी ऐसा ही है। सिर्फ फर्क ये है कि $90 में 1500 मिलता है, वहां 1500 में 1500 मिलता है, सिर्फ फर्क ये है। तो उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इवेंचुअली आपको, हाँ वो लाइव अकाउंट खुलता है, वो लाइव। उसके लिए नहीं, जो पैसे आप भेजें उनके पास पहुंच जाएंगे। नहीं बट वो चार्ज करते हैं ना मंथली होगा शायद $12। वो डेटा फीस, वो GFM वाला काम नहीं है, डेटा फीस। पर ट्रेड का इस वक्त ले रहे हैं $3 मिनी का और $1.5 माइक्रो का। हाँ वो तो ट्रेड का है। तो उससे सिर्फ ये फंडेड अकाउंट बिगिनर्स के लिए मैं इसलिए देता हूँ कि जो लोग नए आते हैं उनको राइट डेमो में मजा नहीं आता और रियल में रिस्क ज्यादा होता है। तो मिडिल ग्राउंड है कि यार देख लो, अगर ट्रेड कर पाओगे, अगर आपको डिसिप्लिन आ गया है तो यू कैन डू इट। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं 30 वर्ड पढ़ेगा क्या है ना, हम लोग ज़्यादा फाइनेंशियल तकलीफ नहीं चाहिए। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप उस टाइम मुझे जस्ट एक अगर आप अलाउ करते थे आप मुझे बताओगे कहाँ करना। तो आपको दे रहा हूँ ना, जुनैद भाई दे रहा हूँ। मैं खुद, क्योंकि मेरा एक ट्रेड होता है, मैं बैठ जाता हूँ ऊपर से नीचे जाके प्राइसेस पे, ठीक है। मैं नैस्डैक करता हूँ, देखिए वो जो प्राइस चल रही है ना 24,465 चल रही है। मैं इन सारे, अगर आप देखें, मैंने यहाँ मूव होने का ये मकसद था, मेरा खुद का ट्रेड उधर नहीं हो रहा था। नंबर 2, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई एम वर्किंग विद। 15 मार्केट्स हैं, जो मार्केट जिस एरिया में पहुंच जाती है तो हम वहां से बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो मेरा ट्रेड एक ही स्टाइल का है, वो जब पहुंचेगी ना 24,800 पे, तो वहां मैं ऑर्डर लगाऊंगा सेल का, सेल लगाऊंगा, क्योंकि R4 है ना, इंटरेस्ट रेट है, R4 है ऊपर। क्योंकि मैं ज्यादा स्कैल्पिंग में नहीं जाता। स्कैल्पिंग होता है यार आपने गए $50 लिए, 100 लिए, मैंने लेने से बड़े पॉइंट्स, और वो बैठे होते हैं एक्सपेक्टेड हाई में। कम ट्रेड कर लें लेकिन क्वालिटी ट्रेड कर लें। मान लो अगर आप जैसे करके 800 में, हाँ वहाँ सेल लगाऊंगा जाके। सेल लगाओगे हाँ जाके फिर वो
हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड हाई है ना वो, बल्कि एक्सट्रीम हाई है आज का, कि अगर आज मार्केट शूर अप होती है तो एक्सट्रीम हाई पे जाके सेल लगाऊंगा, और अगर मेरे खिलाफ चला जाएगा तो लॉस लेके आ जाऊंगा। पर मेरे दिमाग में है कि कितना लॉस लेना है, एंड आई विल गेट आउट। अब दो चीजें, मैंने 2 साल इस फ्लोर पे बैठा हूँ और कोच किया है, राइट। नंबर 1, लोग ओवर ट्रेड कर रहे हैं। नंबर 2, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ऑनेस्ट टू गॉड मैंने ये देखा है कि ठीक है यार, मिड बैंड लिया ट्रेड, अब एक मिड बैंड का स्टॉप लॉस में तो ये भी होता है ना कि जैसे हम लगा रहे हैं ट्रेड, ठीक है, हाँ, उस तक पहुंचता है, निकल जाता है तो लॉस होकर निकल जाता है ना। नहीं नहीं, बस ठीक है ना, तो ट्रेड बंद करना है ना। अब एक क्वेश्चन, अब फ्यूचर्स की ट्रेडिंग प्राइमरली ऐसे होती है, आपने अकाउंट में 1500 डाला, ये रियल का या फंडेड डजंट मैटर, सिर्फ 2 रूल होते हैं, आप पैसे खत्म हो जाएंगे या टाइम खत्म हो जाएगा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में, और कुछ नहीं है। टाइम क्या खत्म हो जाएगा, हमारे पास टाइम होता है शाम के 5 बजे तक, या टाइम पहले खत्म हो जाएगा या पहले पैसे खत्म हो जाएंगे। तो आपने $1500 डाले, आपने एक ट्रेड डाल दिया, ठीक है, अब आपका जो बैंक बैलेंस है वो चल रहा है और टाइम साथ साथ चल रहा है, तो टाइम खत्म हो जाएगा 5 में, लेस से आपका नेगेटिव या पॉजिटिव हो, या टाइम खत्म होगा या अकाउंट बैलेंस। आपने 1500 का ट्रेड डाला, अब मुझे एक खुद आप एग्जांपल बताएं कि आपने एक ट्रेड लिया, मिड बैंड ट्रेड ले लिया, ठीक है, सब कुछ ठीक था, कितना स्टॉप लॉस लेंगे? आप 0 तक बैठेंगे कि यार नहीं अब आएगी अब आएगी अब आएगी, नहीं, तो उसका एक रूल है, रूल हमारे एक बुक्स में एक डिफाइन हुआ है कि 8.5 पॉइंट उतर चुके हैं ना हायर हाई से या लोअर लो से, तो खत्म है मिड बैंड। मीनिंग कि ये ट्रेड आपने लिया था, सारी कंडीशन मैच कर रही थी, एकदम मार्केट की स्विंग चेंज हुई और नीचे की तरफ आ गई, तो लेना पड़ेगा। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी एक्सेप्ट करता है कि कोई भी 100% नहीं है कि आपने इस मिड बैंड पे लगाया। अब मैं आपको यहाँ की एग्जांपल देता हूँ, ये देखें आपके सामने लाइव चल रहा है। मैं अगर 9:30 का ट्रेड देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ मार्केट खुली थी, ठीक है, ये R1 आया, अगर किसी ने यहाँ से सेल किया 2 पॉइंट लिया, बाहर आ गया, ठीक है। नंबर 2, यहाँ प्राइस मिड बैंड पे टच हुई थी, अगर आप यहाँ से बाई करते तो ऑल द वे ऊपर चल, लेकिन यहाँ लेट्स से आपने ग्रीन पे सेल किया, ठीक है, सेल हुआ ना, लेकिन आपके खिलाफ चलेगी, तो हम निकल जाओ, कितना कितना बैठेंगे आप? 200 बैठेंगे, 300 बैठेंगे, 400। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि शुरू में आप किसी को फॉलो कर लें, स्ट्रिक्टली जुनेद भाई को फॉलो करें, स्ट्रिक्टली माजिद भाई को फॉलो करें, वरना विक्रम भाई भी आए तो वो अभी क्योंकि हमारे 1 मिनट बेल्जियम गया हुआ है, तो वो उनके रिप्लेसमेंट है, तो एटलीस्ट आपके पास 2 तो हैं, 2 ना हो तो एक जुनेद भाई तो हैं यार। तो इन ऑर्डर टू वो जहां से आपको, आपका गोल ये है कि अकाउंट लें, $100 बन जाए, फिर सिम पे आ जाए, प्रैक्टिस करते रहें। $100 डे की गेम है सर, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, लाइव स्टूडेंट्स हैं, ये कर रहे हैं। एक अकाउंट पास किया इन भाईजान ने, ठीक है, 450 निकाल लिए, जितनी इन्वेस्टमेंट थी टेक प्रॉफिट की बाहर आ गई, ठीक आ गई, फिर उन्होंने ये 3 और एक एक करके वो कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका गोल ये कि 500 जब हो गए, तो अगर मैं $50 भी डाल दूं, $250 एवरी डे का आता है यार, एवरी डे का। वो बात की बात है, जब आप एक तो पे आउट ले लें, एक हाँ, क्योंकि अक्सर मुझे एक क्वेश्चन 100 बन जाते हैं आपसे खुद से, तो फिर 100 ही की गेम है यार, इससे ऊपर गेम ही नहीं है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं हमेशा सैटरडे को भी सेशन से ये होता है, इसके अलावा कोई हाँ, एक और उसको प्यार से करें, आपका जहाँ थोड़ा एग्रेसिव आए देखें। अच्छा, 2 लोग इसमें बहुत अच्छे करते हैं, या आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, या आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। वो मिडिल वाले जो है ना, उनके पास श्योर नहीं होता ना कि हमने करना भी है कि नहीं, क्योंकि उधर से भी जॉब चल रही है। नहीं नहीं, मैं तो आप अगर इसको सिंसियरली खेलें तो खेलना तो नहीं है, हम प्रॉपर ट्रेड, मैंने सिंसियरली इसको ट्रेड करें। आपके सामने कोई गैम्बलिंग तो हो नहीं रही, आपके सामने एनालिसिस चल रहे हैं,
ग्रीन है बाई करी जाए, रेड है सेल करी जाए, जब तक एरिया ना आए बस। एरिया में से कैसे देखते हैं? लेकिन ये जो आपके नंबर्स आ रहे हैं ऊपर R1 R2 ये प्लॉट हो रहे हैं ना, तो अगर इसके अंदर चली जाए तो अगर आप ट्रेड में है तो निकलना है, और इसके अंदर चली गई तो सेल करना है। तो आर वाले जोन सारे सेलिंग किए, और एस वाले ये देखिए मेरा एक ट्रेड हल्का सा सिम में मैं टेस्ट कर रहा था, एक ही लगा हुआ है। तो यार 100-200 कमाना कोई इतनी मसला नहीं जैसे है। कहने का मतलब ये है कि आपका इधर R1 के ऊपर गई है, हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, तुमको पता है कि वो नीचे जाना है, जानी चाहिए, लेकिन लेट्स सपोज R1 पे नहीं रुकती, वो इतने 9:30 खुला R1 आपने नहीं लिया, कहाँ जाके रुकेंगे आप? पूरा 1500 ड्रेन करेंगे फिर उठेंगे, क्योंकि आपका तो माइंड कह रहा है ये सिर्फ 90 का अकाउंट है, तो अभी आएगी अभी आएगी। और एक और चीज लोगों को किल कर जाती है, एवरेज करना। लेट्स सपोज R1 पे नहीं रुकी और आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, और आपके पास माइक्रो नहीं था, मिनी था। अब वो गई $500 माइनस, आपने एक लॉट और डाल दी कि यार मैं इसको एवरेज, कवर कर वो तबाह कर जाता है, क्योंकि 1500 के अकाउंट में मिनी में एवरेज नहीं होती, माइक्रो में फिर बंदा बच जाता है कि चलो 2 लिए थे फिर एक और 2 और ले लिए तो इट्स ओके। तो सारी की सारा बिजनेस जो है ना पेशेंस का है। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे ठीक है हो रहा है कि मैं आई शुड बी ट्रेडिंग, मैंने 6 अपॉर्चुनिटी मिस की। होता ही है कि 7वीं पे जाऊंगा वो ट्रेड कैसा लग जाए। तो एक चीज बांध लें, अगर इस सारे मैंने 4 साल में एक चीज निकाली है ना, स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, कई दफा बुरा लगता है लेकिन लेना पड़ता है। तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट लग रही है? मेरे को तो सिंपल सा, जैसे हो ना, बैकग्राउंड कलर देखता हूँ मैं, ग्रीन है ऊपर है, और तो फिर 100 बन रहे हैं ना उसमें, बस ठीक है 100 बने, सिम में चले जाएं, डन कर दें, $100 अ डे बना लें, 15 दिन में टेक प्रॉफिट पास हो जाएगा। चलो बहुत ही किसी दिन अच्छा दिन चल रहा है तो 150-200 कर लिया, लेकिन इट्स अमेजिंग। ठीक है। नो प्रॉब्लम सर। तो मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि मैं 2008 से वो एक चीज सिखाते रहे हैं, ग्रीन टू बाय रेड टू सेल, राइट? तो इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करें प्लीज। नो प्रॉब्लम। Congratulations Ji for the second payout, Mr. Gurbaj. Very good. Amazing. So beautiful divergence trade if anybody took. I was in a sim trade testing it in breakout. NASDAQ is touched the bottom and gave us few points at the bottom. Go back to my work to finish this. काफी स्पेस खाली हो गई है।
All right, so ES is heading towards S1 now. Let's see. हेलो सर जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी बिल्कुल सर, सीट खाली है तो बैठ जाए बिल्कुल। थैंक यू। मेरा पूरा लाइक ब्लैंक नहीं, जीरो से स्टार्ट करना है। फिर शायद आप उधर जाए। अच्छा, ये आपने कब स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट किया था फरवरी मार्च में आया था, मैं क्लासेस ली थी। ओके, फिर आप उधर बैठे तो नहीं, क्योंकि डैनियल से पूछ लें अपना राउट क्या है आपने, क्योंकि आपको आना चाहिए फ्लोर पे। मेरा क्या होता है कि मेरा काम का होता है, कुछ दिन मेरी छुट्टी होती है, जिस दिन छुट्टी होती है मैं बैर ही रहता हूँ। ओके, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लें हमें। ऑनलाइन भी मैंने ट्राई किया, बट क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इस साल ज़्यादा होती है, मुझे पता नहीं चलता कि ठीक कुछ करना क्या है, क्या नहीं करना। ठीक है, फिर आप जरा उनसे पूछ लें कि क्या आपका पैथवे क्या होना चाहिए, तो ही वो गाइड यू। क्योंकि थोड़े से आपकी ट्रेनिंग हो जाए तो अकाउंट्स वगैरह फंडेड वो फिर मेरा डिपार्टमेंट आ जाता है, तो ही कैन टेल यू। पूछ लें उनसे कि आपने रीस्टार्ट करना है तो कैसे करना है, और अपना सॉफ्टवेयर भी दिखा दें, शायद अपडेट होने वाला हो। हाँ, नो प्रॉब्लम, सॉरी अबाउट दैट। हाँ, ठीक सर, आप सुनाओ भाईजान। इधर से मैं थोड़ा डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट में चला गया हूँ, तो आई हैव टू मेक एन iOS ऐप, एन एंड्रॉइड ऐप, स्ट्रेटजीज, हम सब कुछ इधर ही है। सिर्फ हाँ, मैं जरा बैक ऑफिस में चला गया, और अदर देन फ्रंट लीडिंग पे तो आई थिंक जब भी चुने थे तभी आज पहली बार मैंने देखा, तो बड़ा अच्छा मतलब ओ यस यस जी। हाँ जी। तो ये अभी फंडेड अकाउंट्स में अभी इस वक्त कौन सा बैठे बैठे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इस वक्त बेस्ट चल रहा है वो टेक प्रॉफिट है। हाँ, टेक प्रॉफिट में फायदा ये है कि $90 का अकाउंट है और वो आपको दे रहे हैं $1500। तो आपके पास 30 डेज है उसको कंप्लीट करना है, और फिर दैट्स इट। तो अगर तो एक्चुअली लकी ना, यस मैंने कल वाला ही रखा हुआ है, तो अगर आप इसको उतार दें, मैं क्लीन कर देता हूँ। तो स्टार्ट ऐसे होता है कि आपके पास 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट का आज आप लेंगे सितंबर 17 को, लेट्स से $90 का। पहले आपने $1500 अपने अकाउंट में बनाने हैं। तो आपका स्टार्टिंग कैपिटल होगा 25K, उसको लेके जाना है 26.5K। ये आपका स्टेज 1 है। इनको ये लोग कहते हैं टेस्ट, उसका नाम EA भी है, वैल्यूएशन भी है, ठीक है। ये स्टेज 2 एंड स्टेज 1, एंड स्टेज 2 में यही काम रिपीट करना है। यहाँ आपके पास 30 डेज है, तो सितंबर 17 से अक्टूबर 16 तक ये काम करना है, पहले वाले। तो उससे
पहले भी फिनिश कर सकते हैं, 5 दिन से पहले नहीं। ये मैंने माइंड इंजन में जब मैंने किया था हम तो मैंने 4 दिन में पैसे बना लिए, हाँ ठीक है, लेकिन 5वें दिन जो है मेरा वो गड़बड़ हो गया। इट्स ओके, हो जाता है लोग। हाँ, एनीवे तो इसमें आपने ये 15 बना लिए, फिर आपने इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, फिर दोबारा 1500 बनाना है। ठीक है, जब आपका 1500 हो गया जिस दिन भी, तो उससे सरप्लस को आपको पे आउट डेली मिल जाएगा। तो सरप्लस, तो लेट्स से आपको $50 भी हुआ तो आपको शाम को पे कर देंगे। तो इस अकाउंट का कोई पीए की फीस नहीं है, ईए की फीस है $90, पीए इंक्लूडेड है, और आप जाएं और सरप्लस एग्जैक्टली। मोस्ट पीपल $100 अ डे करके आपका बन जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मोस्ट पीपल प्ले एग्रेसिव हियर टू। तो ये 1500 का अकाउंट है ना आपका, लेकिन ये अकाउंट पूरा रिलैप्स कब होता है? जब अपना ये ये आपका 1500 डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर आप अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया वापस इधर आ रहे हो, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है तो यही खड़े हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 है ना। स्टेज 1 में जो है अगर मैं 1500 नहीं कर पाया या मैं तो आपका $90 आया हुआ है ना, तो आप फिर से मुझे फिर आपके आप जितने मर्जी चैलेंजेस ले सकते हैं, बट देन सेकंड स्टेज पे जब गए तो फिर अगर ये डिस्क्वालीफाई हुआ तो आपको वापस यहाँ स्टार्ट करना है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है वो $90 में कैपिटल मिल रहा है 1500 का। ये मैं उसको इस तरह पढ़ता हूँ। तो क्योंकि अगर आप बैंक में जाके अपने 1500 भेजेंगे तो 1500 ही मिलेगा, राइट। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रेडिंग आ गई है कि आपको $100 बनाने आ गए तो अपने डाल लें, अगर नहीं कंफर्टेबल तो $90 में ये में। लेकिन दो हैं, एक और कंपनी एक्सपेंसिव है, उनका नाम है पर्डिया, वो फिर एक्सपेंसिव हो जाता है, वो $750 में देते हैं आपको $3000। सो वो उसमें एक ही स्टेज है सिर्फ, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले स्टार्ट दिस। तो $100 अ डे 2 पॉइंट डेली निकालें, पास करें, खत्म करें। और अच्छा, इसमें अप्रोच मैं जो अपना एक मैं अपना स्टीमलाइन जिस तरह रखना चाह रहा हूँ कि मैं पोजीशंस पे फोकस, ये पोजीशन फिर एरिया करेंगे, क्योंकि देखिए इससे नहीं, या अगर आप पोजीशन वाले में है तो फिर अकाउंट खोलें, फंडेड अकाउंट है एफटीएमओ के नाम से। हाँ ड्रॉ डाउन हुआ ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका है क्या नाम है, एफटीएमओ अलाउ करता है ओवरनाइट होल्डिंग का, यही है। तो ये वाला आई थिंक ये क्योंकि सब लोग इसी रिदम में चल रहे हैं तो मेरे लिए भी इजी रहेगा कि इस ट्रेड्स को अगर आप कंफर्टेबल नहीं है किसी मेंटोर के साथ आके बैठ जाएं। माजिद भाई हैं, मैं तो एरिया ट्रेड करता हूँ, मेरा प्राइमरी होता है कि मैं नंबर पे ट्रेड करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग पे नहीं हूँ। मीनिंग आज मैं वेट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट वाला दिन है, बहुत बड़ा है, कि देखेंगे किस तरफ प्राइस जाती है, मे बी R3 पे जाती है, मे बी S4 पे जाती है, डोंट नो राइट। सो मतलब आप एरियाज पे ट्रेड करते हैं, मींस की होल्ड करने हैं? नहीं होल्ड नहीं है, एरिया मीन्स के रेंज होती है ना डे की, तो आज की एक्सपेक्टेड हाई है, एक्सट्रीम हाई है, तो मैं शायद कई दफा पूरा दिन ट्रेड नहीं करता, लेकिन शाम को 3 बजे या सुबह तीन अर्ली तो नहीं हो पाया, लेकिन विद इन दैट 9 to 4 मुझे प्राइस आ जाती है जहां मुझे चाहिए होती है, तो मैं अपनी प्राइस का वेट करता हूँ। तो मैं स्कैल्पर्स, मेरे पास 15 स्ट्रैटेजीज हैं कि अच्छा आप ओवरबॉट ले लें, डाइवर्जेंस ले लें, गैप ले लें, लेकिन अगेन मेरी रेपुटेशन यही होती है कि डैनियल ने आपको एक ट्रेड सिखाया हुआ, आपने पता नहीं कब ज्वाइन किया था, मैंने तो 4 years ago, ग्रीन टू बाय रेड टू सेल, राइट। बैकग्राउंड देखें, ट्रेंड के साथ जाएं, अगर ऊपर जा रही है ऊपर जाएं, नीचे आ रही है नीचे। तो मेरा हमेशा हर जो भी बात करता है, $100 कमा लेंगे, 100 कर लेते हैं, 100 हो जाता है। हाँ नहीं लेट्स से है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज एक डे के अंदर ट्रेड करना है तो 100 बन सकते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है?
क्योंकि अगर 100 नहीं बन रहा फिर मैं आपको मेंटर भेजूंगा कि यार इनके साथ बैठ दें, ये आपके। अब मुझे मिस ट्यूलिप ने अभी भेजा है कि उनके रिजल्ट्स उस ऑफिस से आ गए कि उन्होंने $112 बनाए हैं एक अकाउंट पे और $688 बनाए हैं एक अकाउंट। ठीक है, ये रिजल्ट्स हम, क्योंकि मैं अब एज ए बिजनेस टीम में ये भी देख रहा हूँ ना, क्योंकि 8 मेंटर हो गए, जुनैद भाई, हरनीत, मुर्ताज, विक्रम, ट्यूलिप, हैप्पी, माजिद भाई, कि भाई रिपोर्ट देना मुझे, आपकी एक एथिकल ड्यूटी है, आप किसी के साथ बैठे हैं, करवा सकते हैं। तो अगर $100 में भी दिक्कत हो रही है फिर आप किसी को देख लें। अगर 100 कमा सकते हैं तो ट्रेड लिया, 100 बनाए, दफन कर दिया कंप्यूटर को, नहीं खोलें दोबारा, फिर कल देख लीजिएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। या फिर अगर डिपोजिशन वाला लिखना है तो फिर वेट करें सर, 24,800 पे आएगी तो मैं कुछ देखूंगा। मेरे भी यही ज़हन में है कि आपकी इस वजह से मैंने शॉर्ट मेरा ये सीएफपीस पे मैंने डाला हुआ कि सीएफपी में ऐसे हैं, इसमें पोजीशन मैंने इस तरह की डाली हुई है कि आपकी जैसे ठीक है, ये आप तो सर एडवांस यूजर हैं, किया हुआ काफी टाइम पे, लेकिन मैंने अकाउंट बंद भी किए हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, क्वेश्चन ये है। दिक्कत ऐसी कोई थी नहीं। हाँ, ये वाला मुझे जो है थोड़ा एक लेवल आगे जाने के लिए, दूसरा पोजीशन ट्रेड में मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि पोजीशन ट्रेड में मैं सब अच्छे बना रहा था, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, महीने में $2,000-2,500। ठीक है, ठीक है, साल के 25,000 हैं एग्जैक्टली। और एक बार स्ट्रेंथ और आ गई तो फिर मैं अकाउंट बड़ा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। तो फिर अपना वो गोल्ड में अभी तो शॉर्ट करके बैठा हूँ 2 हफ्ते से। यार देखिए, मैंने तो 4 साल से ये सुना है गोल्ड को लॉन्ग जाना है तो किस प्राइस से है? मेरा शायद 3550 के आसपास है जो 3550, अभी बताता हूँ, मेरी एनालिसिस वर्सेस आ जाएगी, हाँ ये लोअर आ जाएगी, क्योंकि 3616 तक अगर आ गई ना, 3600 तक, तो थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल जाएगा। ये 240 का लोअर बैंड 3616 है, यहाँ से 100 पॉइंट है तकरीबन 37 से। अगर किस्मत अच्छी हुई तो 35 तक मिड बैंड है 1440 का। लेकिन ये क्योंकि क्लाइम हो ही जा रहा है तो ये भी क्लाइम हो रहा है, तो आपका कहाँ है? 3550 के आसपास पॉसिबल है, क्योंकि पिछला जो उसने रीटेस्ट करने आना है ना, वो 3550 पे करना है। तो अब मैं, हाँ ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट का प्रीवियस हाई जो है वो 50 पे है, तो आपको ब्रेक इवन दे सकता है। ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट है ना आपका, मीनिंग के उसका एक्सपायरी तो नहीं होता है। ठीक है, सीएफडी है, ठीक है, स्पॉट कैश सीएफडी कोई मसला नहीं है। अब लेकिन इसमें ऊपर कितना, क्योंकि तो मेरा अकाउंट खत्म कर देगा। आई नो यही तो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि इज इट टू हाई, बट लाइक मे बी इमेजिन करें कि जो 10,000 सोच रहा है इसका, या 5,000 सोच है, 10 तो बहुत दूर है, 5,000 गोल्ड की प्राइस मेरे हिसाब से चली जाएगी, तो उसको तो 3700 सस्ता लग रहा है ना। वो तो कह रहा है ना, इसको मैं तो लॉन्ग बैठा हूँ, इसको 5,000 जाना चाहिए। हमें क्योंकि इतनी बड़ी स्विंग आ गई है 400 पॉइंट की कि हमें जरा ऑड लग रहा है, इसको रिट्रेस ले लेना चाहिए। ये देखें 386 पॉइंट गई है, इसको गिर जाना चाहिए 3550 तक। ये आपके अगर अच्छी रिट्रेस ली तो 35% ले सकती है। तो लेट्स से कि 386, सर मैं आपको उसका मैथ कर रहा हूँ, 386 35%, 135 पॉइंट अगर यहाँ से गिरे, 3740 माइनस 3600 पे पहला आना है, पहला स्टॉप इसका 36 है, जो 4 आवर पे अभी बनेगा नहीं, अभी बन रहा है। पहले तो छोटी स्विंग आई ना, क्योंकि ये देखें एक डाइवर्जन, 2 3 4 5 6 7 तो डाइवर्जेंस बनी हुई है। तो ये आज बड़ा ना क्रिटिकल डे है मेरे हिसाब से। तो ये है मेरी छोटी सी ओपिनियन कि आप नीचे बैठे हैं लेकिन पिछले हाई के करीब है, क्योंकि डेली पे भी ये काम हुआ है, ये सारा काम हुआ है सिर्फ मंथ एंड हाफ में, बल्कि देखिए ऑलमोस्ट $400 चढ़ गया।
ये जब 4 आवर पे जब चार्ट किए ना, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए जब से मैं होल्ड करता ये पहले आपको यहाँ पे कहीं पे मैंने लिया होगा और वो अभी लेकिन अभी आपके पास एवरेज के भी नहीं होंगे, एक्स्ट्रा डाल के एवरेज करनी है अभी तो अगर एक सबसे अच्छी चीज इसको वो नहीं करना हाँ होल्ड नहीं, मेरा क्वेश्चन ये कि ये अब थोड़ी पर्सनल ओपिनियन उनसे ले लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि उसको आना चाहिए 3600 तक, 240 के लोअर बैंड तक आना चाहिए, और अच्छी किस्मत हुई तो 50 और ले आएगी, क्योंकि एटलीस्ट इसके 1 डेली के मिड बैंड पे आ जाएगी, राइट? सो आनी तो चाहिए, वो अभी मैं बात ही कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन इज व्हेन एग्जैक्टली। और मैं देयर और बैंक के साथ एक और क्वेश्चन है कि क्योंकि अभी मैं हाथ चला रहा हूँ इसमें ऑलरेडी और मैं फंड करने जा रहा हूँ कि मैं पोजीशन अभी और ले लूँ ताकि मैं 36 के आसपास ये 36 के अंदर आ गए ना, तो मुझे सिर्फ ये होता है ये लेकिन 240 के अंदर आ जाए, क्योंकि पहला स्टॉप ये 71 है, फिर अगला स्टॉप 3616 तक है। तो लेकिन उस वक्त भी आपको एक क्रिटिकल डिसीजन बनाना है, इफ इट गोज डाउन डबल लॉट से जाएगी ऊपर, देखें जो भी प्राइस होगी। लेट्स सपोज कि अगर आपने एक भी लिया हो, आपने एक लिया 3550, अब चल रही है 3550 प्लस 3720 डिवाइडेड बाय 2, ये 3635 पे गिर जाएगी, ठीक है? इतनी तो रिट्रेस मेरे हिसाब से बनती है, मीनिंग के डेली के भी अंदर आ जाएगी और 240 के भी अंदर आ जाएगी, क्योंकि ड्रॉप होने में आए ये 2 दिन का काम है। कोई कि आप शॉर्ट में बहुत मजा लेते क्योंकि वो एक दिन में हो जाता एक दिन में कवर हो जाता है। आज ये जो देखें, ये तो आप इसकी बात करें, मैं नैस्डैक देख रहा हूँ, नैस्डैक 1300 पॉइंट चढ़ गई है इन ए मैटर ऑफ 4 डेज, कॉन्ट्रैक्ट हायर, एंड अब ये ड्रॉप होने में आई ना, अगर आज 1300 गिर गई तो मैं कुछ सरप्राइज नहीं होऊंगा। लोग कहेंगे ओ भाई मार्केट गिर गई, भाई तो पॉसिबल कि वो इंटरेस्ट रेट गिराएं और मार्केट भी गिरा दें। मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, मैं मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं फंड करके रख रहा हूँ अकाउंट और अपने हाई पे गोल्ड को शॉर्ट करूँ, लेकिन अगर हाई पे करूँगा और पता चला वहाँ पहुँचे ही नहीं, जैसे ये न्यूज़ आए और सब प्रॉफिट लेना शुरू करें तो चीज चली जाएगी। तो आई सेड कि मैंने दानिया भाई को बोला कि तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। उनका ये कहना है कि अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिस होती, 6 बजे के बाद वापस रिट्रेस होगा तब जो है फिर ले लेना। अब वो मैंने कभी किया नहीं है, वो बात समझ में आ गई मुझे, लेकिन वो मैंने किया नहीं, और फिर हमेशा दिल में एक मलाल रहता है कि वो हाई वाला जो है मैंने क्यों छोड़ दिया। तो अभी मैं मतलब बड़ा कुछ 37 वाला जब अभी आज का जो लेकिन अभी इतने दूर नहीं गई आपसे, अभी इतनी दूर नहीं गई है, ये देखें टोटल $20 का फर्क है। कुछ भी नहीं, हाँ। मैं लॉस करके बैठा हूँ तो लॉस में, तो अभी तो वो 200 पॉइंट में। अच्छा, CFD में आपके पूरे लॉट का यहाँ तो 10, अगर आपके खिलाफ इतनी चली गई है तो 1,500-2 हज़ार तो गया होगा आपके। 15,000 I don't know what to say man, I'm speechless। मैं तब से पकड़ के बैठा हूँ और मेरा पूरा लॉट लिया हुआ एक, मैंने उसी वक्त जो है पहले 0.25 करके आगे पीछे लेकर के वो जब 4 आवर पे 2 बार ऊपर जनरली फॉरन निकलती है तो नहीं लेता हूँ, लेकिन जब दूसरा ऊपर मारती है डाइवर्जेंस थी। हाँ, क्योंकि उस वक्त डाइवर्जेंस थी। तो मैंने कहा ये तो डेली वीकली सब कुछ जाएगी, पूरी बाहर निकली हुई है बोलिंजर बैंक से, तो अभी ये बहुत अच्छा देने वाली है। लेकिन एक जो बेसिक रूल है वो भूल गया कि गोल्ड को शॉर्ट नहीं करना, तो वहां पे मैंने फिर कहा कि नहीं ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट एक बार दी भी मुझे, जहाँ पे मैं ब्रेक इवन पे और छोटे प्रॉफिट पे था। मुझे इतना सा प्रॉफिट लेके मैं क्यों निकलूंगा, मैं तो लंबे प्रॉफिट हूँ। उसके बाद इसने मौका ही नहीं दिया। मुझे याद है इन्होंने मुझे एक PDF दी थी 3 साल पहले, अभी भी सुपर एरियाज पे पड़ी हुई है, गोल्ड की ट्रेड का, के 240 से बाहर है, आंखें बंद करके लॉन्ग करते हैं। बेशक छोटा अकाउंट भी है ना, वो भी 2-4 हज़ार दे जाएगा, लेकिन इट्स ओके। अब गोल्ड तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये गोल्ड को गिराएंगे, लेकिन अगर रिकूप करना है तो आप, क्योंकि नैस्डैक और S&P पे ज्यादा आपका नैस्डैक पे खास करके वो है, तो नैस्डैक पे मैं सर नैस्डैक ऑल टाइम हाई है,
लेकिन ये मैंने ना 4 चीजें लिखी, 3 मैं फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली। 24,650 से ऊपर नैस्डैक कभी गई नहीं, 66 ऑलमोस्ट 6700 पे चली गई है ईएस, और 3740 पे गोल्ड चला गया। बाकी अगर डाउ भी, तो मार्केट ऑल टाइम हाई है। अब प्रॉब्लम यह है कि नैस्डैक गिरती है तो गोल्ड बढ़ता है, राइट? तो आपको पेन तो दोनों साइड से होगी, एक में प्रॉफिट है तो दूसरे में पेन है। आज का दिन निकाल लें तो फिर, क्योंकि कुछ भी इसने कर देना आज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कनाडा ने भी तो गिरा दिया ना, तो क्योंकि ये इतनी बड़ी है, क्योंकि फेड्स भी लड़ रहे हैं, ट्रम्प भी लड़ रहा है। आई डोंट हैव एन, अच्छा, ये डायमंड पैटर्न आज का होता है या आज ही का होता है जनरली। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि नहीं, ये मुझे तो लगता है कि अगर मेरी ओपिनियन है, इसको गिरा देना चाहिए। कितना? 1000-1200, क्योंकि मैं आपको बताऊं लास्ट टाइम 18 दिसंबर को इन्होंने नैस्डैक गिरा दी थी। मेरे पास पूरे एक एक दिन का रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। FOMC इंटरेस्ट रेट, अगर मैं सिर्फ इसी को देखो ना, अब पिछले दिनों, पिछली दफा FOMC आई, हमारी स्विंग सिर्फ $335 की थी। तो मैं पूरा ट्रैक करता हूँ कि FOMC की स्विंग की कितनी बड़ी थी। उस फिर जनवरी में आई थी 260। देखें 18 दिसंबर को 1100 पॉइंट आई, 1100 पॉइंट नैस्डैक एक शॉट में गिरी, और उस दिन इंटरेस्ट रेट गिराया था उन्होंने, ठीक है? 18 दिसंबर से ऑलमोस्ट 6 साल होने वाला है, राइट? उन्होंने कोई गिराई नहीं खास। तो पिछले इंटरेस्ट रेट में 335 पॉइंट, उससे पीछे 260 पॉइंट, उससे पीछे 1000 पॉइंट, उससे पीछे 100 पॉइंट, कोई इतना। तो लेट्स सी आज का। मैंने अभी जैसे छोटा सा शॉट लिया था अभी $200 $200 उसको बना के मैंने नैस्डैक पे अपने जो है अगर आज ये गई ना 24,800 का वेट हो रहा है मेरा। मुझे मतलब मैं वही चाह रहा हूँ कि वहां पहुंचे तो मैं फिर दोबारा फिर लेकिन मुझे दिल में एक वो फीलिंग जैसे लगाती यही कह रहा है कि शायद वो ऊपर नहीं, कितनी देखें, कहीं ना कहीं तो रिट्रेस लेनी है ना। हाँ, अब इतनी एक्सटेंशन के बाद भी कोई रिट्रेस नहीं है डेली में, खाली हम नहीं दे रहे, पूरी दुनिया देख रही है। और जो भी खरीद रहे हैं ना, ये सिर्फ स्टॉप लॉसेस किल कर रहे हैं। वो भी जाते हैं, स्टॉप थोड़ा सा लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये नहीं है कि कोई कंटिन्यूअसली, वो सिर्फ बड़े बड़े जो है ना आपके स्टॉप ऑर्डर्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी ने बस करनी है ना कि यार मेरी बस 1000 पे हो गई, 2000 पे हो गई, 50 लोगों की तो हो गई। हाँ हाँ। तो अब वो जितनी बड़ी, जो दुकानदार बड़ा है वो ठहर जाएगा, बाकी सारे निकल जाएंगे, right? तो और गोल ही इनका ये होता है कि, क्योंकि इनको मालूम होता है कि कहाँ कौन कितना बैठा है। देखें जितना ब्रोकर है वो तो डेटा पूल कर रहा है ना। अगर 100 ब्रोकर हो, उनको एग्जैक्टली पता है कितने लोग कितनी पोजीशन पे बैठे हैं। ये ब्रोकर दे नॉट सपोज्ड टू लीक इट, बट लेकिन फिर वो बैक एंड पे जैसे मैं आपसे इसी बात कर रहा कि जो चाइनीज कम्युनिटी है वो तो इस टाइप का सेटअप बना के अपना दुकान चलाती है मेरा। हाँ। तो ये चीजें जो है पब्लिक को तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे रहने वाले हैं। उनका अपना एक प्लान होता है, पूरी दुनिया को वो बताते हैं कि हाँ कि ये ऐसे की वजह से मोहम्मद अट्टा में जाके गिरा दिया और ये ऐसा फ्लैट गिर गया। लेकिन उनका इंटेंशन पीछे जो है सब प्लानिंग के साथ होती है। नहीं वो सही है। ये चीज जो ब्रोकर जो सारे वो कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये हमारा प्राइवेट रिकॉर्ड है, ये यहाँ से कहीं लीक नहीं होगा, हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ है क्या है ये सारे। लेकिन वो लोग तो पीछे ऊपर सर 100% लीक होता है, क्योंकि एक ब्रोकर सिर्फ वाहिद होता है जो आपको बता सकता है कि किस अकाउंट में कितना नेगेटिव चल रहा है और बैलेंस क्या। तो अगर इनके पास 5000 ब्रोकर हो वर्ल्ड वाइड में, चले एक अच्छा नंबर है, 5000 ब्रोकर ग्लोबली हो सकते हैं, 1 सेकंड लगता है भाईजान, सिर्फ ये बता दें कितने लॉन्ग है कितने शॉर्ट है। तो उन ऑफ कोर्स, क्योंकि जो लॉन्ग होंगे उनका फायदा हो रहा होगा ना, राइट? तो ये सब जो मैं तो ये 4 साल से फ्यूचर्स में देखते आ रहा हूँ कि जब जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है ना, वो एक डायरेक्शन में होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि
अब जिसने दिसंबर का सेल किया है वो फिर उसके बाद 3 माह है कुछ करने के लिए, राइट? सो पर्सनली इसलिए मुझे डे ट्रेडिंग जरा ज्यादा पसंद है। 5 बजे आप खत्म, मीनिंग कि आपको कुछ नहीं तो ज़हनी तौर पे मैं तो रात को जो कि मुझे बहुत वो मैं पता नहीं अभी शायद ये इम्पैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन रात में भी जो है फोन तो बगल नहीं होता है, वो आदत में बंदा हर वक्त देख रहा हो। आई डोंट नो कि ये टेक प्रॉफिट वगैरह आप फोन पे कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट आप फोन पे कर सकते हैं, बिल्कुल। और मैंने एक चीज देखी है, मैं उस पर करने वाला था कि जब ये गोल्ड में फंस गया, मैं जिस सीएफटी से कर रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी चीज है कि वो मेरे सीएफटी अकाउंट पे जो हो रहा होता है उसके पीछे ये ट्रेड कर रहा होता है निंजा का चार्ट, तो मैं मुझे पहले पता चल जाता है कि मतलब ये मैंने गोल्ड पे देखा है। अब देखें अब की प्राइस क्या चल रही है, 37.20 है हमारी फ्यूचर्स की दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। आपकी क्या प्राइस है? $8 का फर्क होना चाहिए। सीएफटी का तो फिर अलग होता है ना, हाँ, $8 का फर्क है। इस पे आप बता रहे हैं $8 410 था, 415 पे आया GS2। आप सर्टिफिकेट चलिए है 3685 पे है अभी गोल्ड मेरा। ठीक है, फिर अभी अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के गैप से चल रहे हैं। लेकिन इन लोग सीएफटी में कभी वो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चेंज करना पड़ता। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो मसला नहीं है, लेकिन हमारे गैप तो $40 पड़ गया ना। 3740 माइनस 3685, ऑलमोस्ट $35 का फर्क है। ये 6 या 8 या 7 का फर्क होता था, और हर कॉन्ट्रैक्ट पे अब वो अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ बारोइंग कम है तो इस वजह से ये गैप बढ़ा है। तो तो फिर अभी मैं that's a tough situation to be in, I don't, because क्योंकि उस हर 240 से बाहर है तो अभी तक 240 के अंदर भी नहीं ना आ पा रही। तो ये भी तो एक, क्योंकि जो इसने सबसे बड़ा तंग किया ना ऑनेस्टली वो यहाँ था, ये जो $88 की मूव आई है ना, हाँ यहाँ तक तो ठीक था। हाँ ठीक है, 3650 पे बंदा आप 30। मैं तो बस सोच रहा था कि अब ये तो चेंज हो रहा है, अब रिट्रेसमेंट होगा। यस यस, लेकिन इसके लेकिन बाद ये जब इसने यहाँ से एक $100 की मूव ली ना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 350 की मूव ले चुका था, अब डेली को इसको, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं ये होना है तो ये $60 एक एक दिन का काम है। क्योंकि ये देखिए ना 10 से 12 के दरमियान $60 उतरे, कि ये भी डाइवर्जेंस हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। हम 30 मिनट पे जरा थोड़ा डिफरेंस 30 मिनट पे तो मैं नहीं अपनी मतलब कि नहीं, आपके लिए position पे मैटर नहीं करेंगे, लेकिन ये 30 मिनट में आपको, मैं यही बात मैं हैरान ही होता हूँ आज के दिनों में 2025 में 30 मिनट का चार्ट भी $30 मूव हो रहा है। तो दैट्स ए गुड साइन कि यार अगर आप हैं तो जल्दी सिचुएशन से आ सकते हैं बाहर। तो अब अंदर जुनैद भाई है, उनसे थोड़ी एडवाइस भी लें, वो गोल्ड के एक्सपर्ट है। हाँ वो बता रहे थे ही नोज गोल्ड इनसाइड आउट, क्योंकि वो खुद लाइव बड़ा काउंट करते हैं। शॉर्ट भी उन्होंने बताया। रिकवर कर लिया था वो 3662 पे थे। अच्छा मैंने कहा निकल जाएगा, इसने नहीं रुकना, तो वो ब्रेक इवन आया, निकले और फिर वो शूट कर गई, तो उनको एक ब्रेक इवन का मौका दे गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट भी वो भी 30,000 माइनस पे पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनका भी अकाउंट बढ़ा है। तो लेकिन जैसे ही उनको ब्रेक इवन आया, वी सेड गेट आउट एंड देन, क्योंकि मुझे ये नंबर नजर आता है 50 बस, होपफुली हाँ ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये इस पे मुझे फिर से पूरा वो डे वन से जो मैंने क्लासेस की है कि मुझे चीज़ें प्रिंसिपल तो सारे याद ही, खास करके 15-10 चार्ट और हाँ 30-20 चार्ट्स पे जो है वापस जाना पड़ेगा, जो मैं डेली बेसिस पे नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ 4 आवर चार्ट नहीं नहीं, वो फिर आपको स्कैल्पिंग के लिए चाहिए होगा। प्रॉफिट के लिए मुझे जो है उससे आना पड़ेगा। चलो मुझे नहीं पैसे मिल करके जरा मशवरा लेता हूँ गोल्ड का। नो ब्रो, इस पे टेक प्रॉफिट पे जो है हम सब नो ब्रो, $10, $10.
All right, let's go back to work. Consultations. S2 is officially done, G. 410. Beautiful. Time is coming. It's beautiful trade, S2. $24,410. Mid band is coming. 1510. Bit of a divergence on 1510, and you have gave you 3 candle rejection, 4 ticks, but the boxes are above. So the fib boxes are high up there. Just know that. So maybe we'll fall inside. Mid band worked. 6665, 6663. It worked. Hello. Good, good, very well. Yes, yes. Yeah, I did it like 22 years ago or whatever. Oh, that's a good one. No, I don't think so. Back then there were no passwords, nothing. Sorry, sorry. Okay, sure.
Yeah, no problem. So you're gonna call me back, or how is this gonna work? Or okay, yeah, no problem. So I'll stay online. Or correct. Yep. Try Rafay 98 at hotmail.com. No, to be honest, I wouldn't. 389. Yep. Correct. I like I if you have a question, I can try to answer. Just say put my name Rafay. Yeah. That is it. It's just that's the nickname. For education, try that. No, to be honest, that's. Okay, do they not have a number where I can call and get this going? Sure. No problem. Okay, thank you. You can WhatsApp me and or Ali and no problem. Thank you. Okay, bye. SRES is building on 1510. You have a midband that worked again. Beautiful. So
Going back to strategy building. Oh man, too many things to do. And starting tomorrow, you guys will have clocks for every mentor. So, you know, just like mine, it's showing. Busy guy, of course. वालेकुम सलाम, क्या चल रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। और सेट हो गया आपका प्रोग्राम? जी जी। मेरे ख्याल में मेरी आपकी पहली मुलाकात है। नहीं, मेरा नाम जियाउद्दीन। अच्छा, तो शायद व्हाट्सएप पे होती है बात। एक तो सब तो नहीं अच्छा, आपने क्लास ली है ये? खुद तो ले ली। अच्छा, वेरी नाइस। तो रिफ्रेशर कोर्स ले रहे हैं? तो गोल्ड में करने की कोशिश कर रहा था। गोल्ड तो S&P में कर रहा हूँ। अच्छा, गोल्ड में गोल्ड अच्छा है, लेकिन पोजीशन ट्रेडर वालों के लिए अच्छा होता है। मीनिंग के आप पोजीशन करते हैं, मीनिंग के डे ट्रेड करते हैं। डे ट्रेड मिड बैंड ठीक है, गोल्ड में 3 कैंडल रिजेक्शन ठीक है, सारे ये गोल्ड नैस्डैक चलती है ईएस के साथ और डाउ और रसल के साथ, तो गोल्ड की ना अपनी ही दुनिया है। तो वो फिर उसको देखने के लिए, क्योंकि आपको मैं जैसा नैस्डैक है आज इंटरेस्ट रेट का वेट कर रहा हूँ, S&P है कुछ वेट कर रहा हूँ, गोल्ड पे आप किसका वेट करें? तो गॉड्स करेंसी दे कॉल इट। तो जीसी नहीं अच्छा है सर, जो भी आपको दे पैसे वो मेरे लिए गोल्ड है। मैं बैंकर हूँ। वेरी नाइस, 42 years I work in the banking. वेरी नाइस। हियर लोकली? मैं flew करा from India, ठीक है, ठीक है। then moved to Middle East, for Very India, Hong Kong, China, UK. कनाडा का बैंकिंग सिस्टम ही ठीक करवा दें, ठीक करवा दें। यहाँ तो $1000 लेने जाओ तो लगता है आपको ही ना बैंक लूटने आ गए। और मेरा फेवरेट बैंक डिजिटल दौर में HSBC, इससे अच्छा बैंक नहीं मैंने नहीं देखा। मैं हांगकांग में अकाउंट खोले हुए हैं। I worked 22 years for HSBC. हाँ। HSBC एक जमाने में हाँ नंबर 1 बैंक इन द वर्ल्ड। हाँ अभी बैंक जेपी हाँ, अपनी लेकिन अभी भी मैं मतलब मैंने ट्रेडिंग का अकाउंट खोलना था 2008 में, जब मार्केट क्रैश हुई ना, उससे थोड़ा सा पहले मैं यहाँ से फ्लाई करके गया, नो इश्यूज। मैंने उनको कैश दिए, कन्वर्ट कराए US डॉलर में, मल्टी करेंसी अकाउंट खोला। 20 मिनट में उनकी मेन ब्रांच में एक अपॉइंटमेंट मिली, बिजनेस पर्सनल खोला अकाउंट। तो हांगकांग का इंफ्रास्ट्रक्चर और अकाउंट खोल के पैसे जमा कराए, साथ ही ब्रोकर अकाउंट खोला और अली बाबा के शेयर्स ले लिए, राइट। सो उस दिन मैं HSBC का फैन हो गया था। उन्होंने टोकन दिया, कहने पूरी दुनिया से करो, बेशक $1 मिलियन भेज दो, हमें तुम्हारे पैसे हैं ना, तो मैं तुम इतना हाई सी। और यहाँ पर भी जब था, लेकिन उसके मुकाबले में कैनेडियन बैंक्स तो लगता है कि गार्बेज है। यहाँ तो ATM लेकर तो वही ATM पे जाना चाहिए बैंक में आपका अकाउंट।
क्या करनी और दुनिया की पॉसिबिलिटी में जाओ क्या किया बिल्कुल। प्लस वो एक रिलैक्स्ड बैंकिंग है। यहाँ पर बैंकिंग ऑनेस्टली फील होता है क्राइम लगता है। जब उस जमाने में 77 में ज्वाइन किया मैं हांगकांग गया। हांगकांग में हेडक्वार्टर था HSBC 24 स्टोरी बिल्डिंग। बिल्कुल ऐसे ही। वो जमाने में स्विफ्ट में था। यस। सेलेक्ट मशीन पे चलता था। एलसी जाना तो कोरियर से जाना। तो हम डेवलप कर एक प्रोग्राम हेक्सागन पूरे वर्ल्ड को दिए। हेक्सागन में ऑनलाइन पूरी सर प्रीमियर ने जो तबाही मचाई ना HSBC प्रीमियर ने, और किसी ने नहीं मचाई। खत्म। बेचारे कनाडा में थे, RBC ने उनको भगा दिया। लगा दिया। तो लाइक यू कैन सेंड ए वायर, डजंट मैटर जिस मर्जी करेंसी में, मल्टी लाइक एनीवे। सो कनाडा में तो अभी कोई अच्छा बैंक नहीं है। नहीं ये तो चल रहा ना के नाम से ये तो कंट्रोल्ड गवर्नमेंट्स हैं पांचों बैंक्स। तो really nice meeting. एब्सोल्युटली लाइकवाइज जी, नो प्रॉब्लम। आपने ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट एंड बैक करके सर्टिफिकेट देते नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अपना भी दे देता हूँ। आपका ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है मेरे तो पैसे। तो मेरा रोल यहाँ पर है बिजनेस डेवलपमेंट का, क्लाइंट एक्विजिशन का, स्ट्रेटजीज, बैक एंड का। आपके सुनते रहता हूँ अभी इसके जैसे आते रहते हैं। सर अब मैंने 8 कर दिए, खाली एक फ्लेवर नहीं ना चाहिए होता लोगों को। उनको जुनैद भाई, तो मैंने कहा यार जो आपका दिल है वो करें। चलिए अच्छी बात है। नो प्रॉब्लम। अच्छी बात है। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, आप उसको ना फोन से आपने QR कोड फिर वो आपसे कहेगा कि आपने वही इंफॉर्मेशन डालनी है जो आपकी इंफॉर्मेशन। आप आ गए ना, आप ऑफिस में आ गए ना, आगे नहीं कर सकते। Yes, go ahead. Yes. No, no. Dow already hit high, Russell hit high, NASDAQ is not good, and S&P is not. Yeah, not much after cool.
Divergence. Thirty 20 top of the bar. Interest rate. Interest rate. It didn't go to S1 properly. Yes, NASDAQ got to S2. Dow and Russell expected high, so you never know. From here, 24,404 is the low. S2 is officially done.
Please, if you're doing a PA account, no trading. You're gonna ruin yourself. And accounts too. Only Purdia is allowed. जब हम लोड करते हैं ना तो एमपी लोड हो रहा है मैक्स लोड हो रहा है मैक्स आपने वैसे ही रखना है लेकिन ना यहाँ पे जाते हैं मैं लोड कर रहा हूँ हमें ये चाहिए बेटा मैक्स लोड कर रहा हूँ मैक्स क्यों पढ़ रहा है लेकिन अब ये चलेगा वो मैक्स नहीं चल रहा नहीं मैक्स नहीं चल नहीं ठीक तो हो गया लेकिन वो पढ़ना पड़ा रहेगा फ्लाइट कर रहे हैं Another mid band coming bottom. यही चाहिए ना आप करें मुझे बोला तो मैक्स और पैकेज में करें उसको दिखा दें तो 75 को आपके पास रहेगा ना वो उसी को रद्द करते हो हमने नहीं कर सकते ये देखिए ना कि आपके पास ये चीज रखो आप हाँ तो नहीं करना आपका नहीं वाला आप अपनी मेल से निकालें तो मेल में जब आप जाते हो आपका हाथ सीधा जाता है तो उसी को जो आप रद्द कर ये आपने I think rest of the streams are done, so I can start to download and upload them. All right. Either another mid band is giving you almost a point or half.
Yes, hello? Yes. So the whole situation now is a public comment. Okay. Taking one ID about Okay, I'll get that done as soon as possible. No. No problem. Perfect. Thank you. Thank you. Okay, bye. This is how market is supposed to move with ES. Very gentle up, mid-band working, SRES working, top of the wall working. So this is officially working properly today. Yes. All the theory that we teach, another mid-band and good. Sorry, nothing much to say because nothing is happening. Still writing code for the strategy. I gotta move this window over here. That's how I'm gonna do it. So which strategy am I working with? The question is, which strategy I'm writing? I am writing code for your mentors on their laptop. When they click something, it shows up for you as long as you're in sync, and it shouldn't cost you anything. That's the goal.
The service, I'm trying to include it. So, new. And Q. 500. Duplicate in a new window. So today the reports are coming in. What are the reports? Mentors. Okay, so far. What's the report? Mentors. Certified mentors. Today. NASDAQ happy, first trade, NASDAQ long, second trade, NASDAQ long 10 points, third trade, NASDAQ long 10 points. Vikram by ES first trade, short 2 points, ES second trade, long 2.25. Tulip, ES R1 2 points, NASDAQ S1 lower limit 10 points. Underneath 10 points and QS2. And Russell. So Murtaz is gonna give a report, of course, as well as oh, good. 11:30. Thank you. No, nothing. No. No. थैंक यू No. R1 ले लिया था हाँ हाँ स्वामी लेके सारा इंटरेस्ट रेट हाँ अभी तो अब अभी नो प्रॉब्लम अब नहीं ठीक है जी जी या नो प्रॉब्लम चल चलो जी in good hands you're in better hands actually you're in very good hands don't worry है मैं तो फ्री हूँ आ जाए बैठा हूँ all right let's do this
NQ strategy. Indicator. जी सर, हाँ बैठे। बिजनेस की बात करें फिर हाँ, मेरा थोड़ा लाइव स्ट्रीम चल रही है, बताएं। पूरा चीजें 12 o'clock, क्योंकि यूरोपियन कैंडल बंद हो तो मैं ऑफलाइन मैं वेट करें, म्यूट करता हूँ। एक सेकंड। We can always mute the audio. 1 second.
डोंट वरी, सिर्फ आप ये 0694 हरप्रीत है मेरा नाम। ठीक है, विल टेक केयर ऑफ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ हाँ जी, ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਨਾ हाँ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ चलो ठीक है, करते हैं। पहले 22 तो पैसे कटो, पहले पैसे। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, अभी भाई से तकरीबन मेरी 3 साल से इसके बाद 2 साल से बात हो रही है भाई ठीक है। कोविड के जमाने से ये आपसे शुरू तो तो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है? ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका नाम क्या है? राफे, अब्दुल राफे। मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ। भाई मेरा नाम तो नहीं था लेकिन मुझे आप समझे कि मैं तो बिल्कुल माली हूँ। हमारे ऑफिस में सेइंग है कि ब्रीदिंग होना बंदे की चल नब्ज चलती है, हम ट्रेडिंग सिखा देते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ओके एक तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके लुक करता है ओवरवेलमिंग, तो पता नहीं क्या हो रहा है, चीजें चल रही हैं। तो 2 ऑप्शंस हैं इस प्रोग्राम के। ठीक है नंबर 1, हम प्राइमरी आपको रेडी करते हैं डे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है डे ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने ट्रेड खोला, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम भी है, तो 1 सेकंड। आई स्टूडेंट ओके, तो पहले ਤੁਹਾਡਾ करिए। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ रेफरेंस तो आए ने, हाँ जी ठीक है। ये भी डे ट्रेडिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट मार्केट्स चल रही हैं, तो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन डेटा है, मैथ के साथ है, गैम्बलिंग नहीं हो रही। ठीक है तो हमारा फॉर एग्जांपल ये कुछ चार्ट्स चल रहे हैं, ये है गोल्ड की प्राइस ठीक है 3720 डॉलर। हमारे कंप्यूटर ने कहा है कि अगर गोल्ड आज 3740 हो गया ना, वहां सेल दबा देना। ठीक है ठीक है, एवरी मॉर्निंग सिंस 2008 हम लोग ये प्रोडिक्ट करते आए हैं। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है 4 साल पहले। मैं ट्रेडिंग 20 साल से कर रहा हूँ, 4 साल पहले मैंने इसको ज्वाइन किया। और अब मैं 2 साल मैंने पहले मेन फ्लोर चलाया एज ए टीचर एंड ट्रेनर। अब मैं ज़रा बैक एंड को संभालता हूँ, लीड मैनेजमेंट, दिस लाइक दैट। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन, एक है कि आपने सॉफ्टवेयर जो है ना हमारा ये वाला, ये बाय कर ले। ओके इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली $7,000। ठीक है और डैनियल अगर आपको कोई फैमिली एंड फ्रेंड दे, दैट्स नॉट माई। मैं प्राइमरली डील करता हूँ जो लोग इसको बिगिन करना चाहते हैं लो कॉस्ट मंथली लीज प्रोग्राम पे। ठीक है, ठीक है, 5 से 7 8 हज़ार डॉलर हर बंदे के पास होते नहीं है, मैं कभी जज नहीं करता, शायद किसी के पास हो, किसी के पास ना हो। अगर आप नए हैं, आप स्टार्ट मंथली कर सकते हैं और ऑलवेज ज्वाइन कर सकते हैं इसको फुल टाइम। कोई फर्क नहीं है सॉफ्टवेयर में, एक मंथ टू मंथ चलता है और एक आप अपफ्रंट सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर की एक कॉस्ट है, आपको फिर क्लासेस लेनी है। जैसे अगर मैं आपको दोनों रूट बताते हैं कि अगर आपने सॉफ्टवेयर बाय कर लिया तो आपकी पहली क्लास होगी सैटरडे को, फिर दूसरी क्लास संडे को, फिर तो पहले मैंने आपको सिखाना भी तो है ना ये हो क्या रहा है, ये लाइनें क्या है, ये कलर क्या है, एच क्या लिखा हुआ है, HL क्या। तो आपको समझ है कि आपने गाड़ी चलानी सीखनी है, तो पहले तो मैंने आपको G1 करवाना है, G1 के अंदर थ्योरी करवानी है सारी, एक से एंड तक चलाना। फिर आपका एक टेस्ट होगा, G2 होगा, फिर आगे G होगा। अगर आप ट्रक भी चला लेंगे, फरारी भी चला लेंगे, और नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमने आपको बिगिन करना है। अगर आपके पास टाइम है इन पर्सन लेने का और फाइनेंसेस हैं तो आप बाय कर लें। अगर आपके फाइनेंसेस उस तरह नहीं है या अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो हम इसके लेते हैं $300 पर मंथ। ठीक है, आपको एक दूसरे ऑफिस में बेचते हैं क्योंकि हमारे 2 ऑफिसेस लीज वाले हैं और ये परचेज वाला है। एग्जाम्पल मैं हमेशा ऐसे देता हूँ कि आपने यहाँ से, आप बैकग्राउंड पाकिस्तान से, जी पाकिस्तान जाना हो, PIA में बैठे हैं, प्लेन वही है, सब कुछ है, बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास है, फर्क तो कोई नहीं है, सिर्फ पैसों का फर्क है और सीटों का और एंटरटेनमेंट का फर्क है। प्लेन भी वही है, कैप्टन भी वही है और डेस्टिनेशन भी वही है। ख्वाह आप $300 पर मंथ दें
या अपफ्रंट दे दें, चीजें आपको सेम मिलेंगी। एक सॉफ्टवेयर आपने बाय कर लिया और एक आप लीज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेम, एरिया सेम, आपकी इसकी स्टडी सेम, कॉन्सेप्ट सेम, सिर्फ ऑफिस बदलेगा। तो आपको अंडर डिफरेंट सुपरविजन में, एक्सपर्ट सुपरविजन है उसके ऊपर आपको, और कुछ आपने फिर काम अपने खुद करने, सेल्फ स्टडी है हमारे पास। कोई 20 घंटे का, कुछ क्लासें आप ले सकते हैं इन पर्सन अगर बाय करेंगे, अगर नहीं बाय करनी तो आपको खुद पढ़नी है। मीनिंग के डैनियल के जो लेक्चर हैं, 4 बड़े लेक्चर हैं, हैवी इनको हम कहते हैं, वो 20 घंटे के हैं। तो उसमें नोट, ठीक है कुछ नहीं समझ आएंगे, लेकिन अपने आप को एटलीस्ट 3 माह दें इस सिस्टम को समझने के लिए, इस सिस्टम के अंदर आने के लिए। और एक दफा मैं बार बार हमेशा हर प्रेजेंटेशन में ये कहता हूँ, इस बिजनेस में 2 नुकसान होंगे। एक नुकसान ये होगा कि आप एक दफा इस बिजनेस में आ गए ना तो वापस नहीं जा सकेंगे। मैं ये आज आपको क्लियर, आज आपको नहीं पता कि अंदर क्या है। एक दफा अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि नशा इतना बढ़ जाएगा। आपने 37-40 होगा और वहां सेल दबाया और लेस देन 10 मिनट्स में आपके अकाउंट में $200 आ गए और पहला ही ट्रेड अच्छा हो गया, आपकी साइकोलॉजी बदल जाएगी। यू विल नो लॉन्गर बी द सेम ह्यूमन। तो मैं बहुत अपफ्रंट क्लियरली आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ एक बंदा कामयाब है अगर हमारे इंडस्ट्री में, वो जो डिसिप्लिन से चलेगा। इसमें गैम्बलर नहीं चलते। गैम्बलर क्या होता है जी, थोड़ा सा बना लिया, फिर ग्रीड आ जाती है। तो 4 ह्यूमन इमोशन आते हैं आपके इसके अंदर, इस बिजनेस में। सॉफ्टवेयर भी ठीक है, हर चीज सही है, 200-300 रोज का बनाना भी आसान है, मसला कहाँ आएगा। ओह अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड टू सी यू, वेरी नाइस। हाउ आर यू फीलिंग बॉस? गुड, बेटर, बैक टू वर्क? I'm just kidding man, take your rest। मजाक कर रहा हूँ यार, बड़े फिट हो के आ रहे हैं वैसे, यानी कि चिन भी अंदर चली गई है। तो वेरी नाइस, गुड टू सी यू मैन, नो प्रॉब्लम। तो इसमें 4 ह्यूमन इमोशंस आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। नंबर 1 ग्रीड, तबाह करके रख देगी। नंबर 2 फियर ऑफ मिसिंग आउट, वर्ड होता है फोमो। ट्रेड डाला था आपको, वो आई 40 पे आई, आपने ट्रेड दिया, मिस हो गया जी, आप कहीं वॉशरूम में थे या था ये गाड़ी पहुंचे नहीं, अब आपने कहा यार मैं फिर घुस जाऊं, और वो आपने किया और आपके अगेंस्ट चली गई। तो और तीसरा है रिवेंज। मैं सर मैं पूरी साइंस चढ़ाई है, गुस्से में ट्रेड करना। गुस्से में है, अभी आपने पैसे कमाए थे $100, $200, $300, फिर नुकसान हुआ, फिर आपको गुस्सा आया, उस गुस्से को कवर करने के लिए आपने एग्रेसिव, तो आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड से ना बहुत बाहर आ जाते हो। तो ये सारा काम लाइक डिसिप्लिन का। तो चौथा एलिमेंट डिसिप्लिन। 4 चीजें आप पैदा करें, 94 चीजें, 96 चीजें मैं कर दूंगा। डाइवर्जन, मिड बैंड, गैप ट्रेड, ओवरबॉट, सारी चीजें मैं, टेक्निकल मेरा टीम है। तो ये सर इस बिजनेस के धंधे के सिर्फ 4 प्रॉब्लम है, ग्रीड, डिसिप्लिन, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड रिवेंज, इमोशन। ठीक है, ट्रेड आता है तो हमने आपको समझाया हुआ है, ये 40 से अगर 43 हो गए ना तो ट्रेड बंद कर दीजिएगा, मीनिंग के नुकसान में जा रही है। तो आपने कंप्यूटर ने जो प्रिडिक्ट किया है, कंप्यूटर 100% राइट नहीं होता, लेकिन हम लोग 90+% राइट होते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर, हम नहीं। तो सॉफ्टवेयर कहता है कि ये अगर आपको यहाँ ग्रीन नजर आ रहा होगा, ठीक है, इतना आसान है कि अपना सिर्फ माउस लेके जाना है इस लाइन के ऊपर और बाय दबाना है। ये सीखना है आपने कि बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। बाकी 96% काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। आप आए, आप देखें, बाकी हमारे मेंटोर्स हैं। लीज के ऑफिस में आपको मिलेंगे 4 एक्सपर्ट्स, मिस्टर विक्रम, मिस्टर हरनीत, मिस ट्यूलिप, मिस्टर हैप्पी, मिस्टर मुर्ताज, ये 5 आपको मिलेंगे। जो लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर आप खरीदते हैं उसमें आपको 3 मेंटर्स मिलते हैं,
really दो, माजिद भाई, जुनेद भाई, डैनियल भाई और मैं। hey, तो वी हैव अ फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, वन मैन शो है नहीं, 30 एम्प्लॉइज हैं, हम 7 दिन ऑपरेट होते हैं, 3 ऑफिसेज हैं, 12 से ज़्यादा मेंटोर्स हैं। तो ये मेरी है प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको 3 घंटे की चीज़ 13 मिनट में बता दी। मैंने पिक किए you need to like focus for four major things, right? Three. 4 right, yes. Discipline and revenge and face of turnout, something like that, right? So नहीं से एक बात नहीं सकता डिसिप्लिन में खराब कर डालना चाहिए। पाउल कितने बजे आ सर 2 बजे, 2 बजे कोई बात नहीं, आज कोई भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए चलें सर, निंजा टेक प्रॉफिट में लॉगिन करें। और फिर एक फायदा है, एक दफा आपको सिस्टम समझ आ गया, सॉफ्टवेयर समझ आ गया, तो एक इस बेनिफिट ये है कि आपको अपने पैसे हमने इन्वेस्ट करने देंगे, हमने खरीदें या आप लीज पे लें, आपको हमने पहले तो 3 माह सिखाना है ना हो क्या रहा है। आप पहले गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, अच्छा जी न्यूज नहीं पढ़नी आती, एफओएमसी क्या होता है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा जी कब बोलना है उन्होंने, आज से पहले आपको ये नहीं पता होगा उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। तो पहले आपको ट्रेनिंग में से गुजारना है, G1 करवाना है, G2 होगा, फिर पैरेलल पार्किंग होगी, फिर कहीं जाके 3 माह बाद एक डैनियल की ब्रीफ आती है सुबह 15 मिनट की, 10 मिनट की, 5 मिनट की, और ब्रीफ में आज जो वो सुबह कहते हैं, जिस दिन आपने वो ब्रीफ समझ ली ना तो आप ट्रेडर हो गए हो हमारे, मीनिंग कि आप अगले लेवल पे जा सकते हो। ओके, उन्होंने कहा है कि S&P का ये लेवल है, वैल्यू एरिया ये है, डाइवर्जेंस ये है, क्या देखें, तो बाकी फिर सारी चीज़ें टेक्निकल हैं, साथ साथ आ ही जाती हैं। कैरियर अच्छा है, बहुत हाई रिवॉर्डिंग है, लो रिस्क लो इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिवॉर्डिंग हाई है। लो रिस्क लो इन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि अपने पैसे नहीं डालने, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको पेयर कर देते हैं हम, और आप अपने पैसे नहीं डालते। लेकिन ये नहीं होगा कि आज आप शुरू करेंगे और कल से आप 10,000 अ मंथ, इसको इस प्रोसेस को 3 माह पूरा आयरन हो लेने दें, और फिर इंशाल्लाह जो है ना आप ऐसी स्किल एक्वायर कर लेंगे कि पूरी दुनिया में, इस वक्त लाइव जा रहे हैं हम, माजिद भाई भी, जुनेद भाई भी, पूरी दुनिया में हम लाइव जाके आप कनेक्ट होके अब से जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, 60 मेंटर्स हैं। तो इसमें सर कोई स्पेसिफिक होता है कि मैंने सर ट्रेडिंग गोल्ड ही करनी है? नहीं 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 सर, 18 चीजें हैं मिनिमम 15 तो 4 तो हम करते हैं। आप चार आप ऑफर कितने पे करते हैं? हम 15 मार्केट्स करते हैं। 15 ये देखें 15 छोटे छोटे डब्बे नजर आ रहे हैं, नैस्डैक, रसल, डाउ, गोल्ड, S&P, क्रिप्टो। ये आप पे फ्लेवर है कि आपको वेनिला पसंद है या आप हमें क्या रेकमेंड करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम S&P से। ये सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक ओरिजिनल, आपको सारी स्टडी में S&P नजर आएगी, हर चीज में S&P, क्योंकि S&P के इर्द गिर्द फ्रेमवर्क बहुत बड़ा है, न्यूज का है, अर्निंग्स का है, मीनिंग गोल्ड में ना, आपको मैं गोल्ड तो सिखा दूं लेकिन गोल्ड में कुछ है ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि उसका सर पैर ही नहीं है, कहाँ से गोल्ड पढ़ाना शुरू करूंगा। देखिए सर, मैं आपको एक अपने बारे में बताऊं कि मैं एक्चुअली इतनी ज्यादा पोर्टफोलियो पे प्रोडक्ट नहीं जाना चाहता हूं कि एक दो के ऊपर 2-3 टॉप 3 है सर, लेकिन टॉप 3 रखी हुई है, नैस्डैक, ES, गोल्ड, बस दैट्स इट, इनफ है। $100 कमाना है हमारा जो टारगेट है। अब मैं क्या चाहूंगा, आप पढ़ें, 1-2-3 माह के बाद इतने केपेबल हो जाएं कि रोज के $100 निकालें इस मार्केट से। 100 का मतलब अगर आपको 100 निकालने आ गए ना कंसिस्टेंसी से, बेशक वो 25 हो, 50 हो, 700-800 1000 की बात नहीं करनी, 100 निकालने आ गए, इसको हम एक रिटर्न गारंटी भी देते हैं कि आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। S&P के 2 पॉइंट का मतलब $100 होता है। अगर आपको 2 पॉइंट आ गए, यू आर एबल टू मेक $10,000 पर मंथ, क्योंकि वो 100 का मतलब होता है कि महीने के बने तकरीबन 2500, और फिर आगे 4 अकाउंट या 5 अकाउंट हम लगा देंगे, और वो 7, तो वो फिर बात की बात है लाइक हाउ टू डू इट। ओके,
तो इसकी ट्रेनिंग जो है अभी बता रहे थे कि वो मेरे ख्याल शायद उसके कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस 300 के अंदर सब इंक्लूड है। 300 पर मंथ, आप एक मंथ लें, आपको पसंद आए, आप वो जायका चख लें ना, तो आप जाके बाइक खरीद लें, आप खरीद लें सॉफ्टवेयर। आप कहते हैं नहीं यार मैं अभी 2-3 माह ना इसको लीज पे लगाना चाहता हूँ, और अगर कुछ लोग हैं हमारे पास 20 माह से 30 माह से हैं लीज पे, जब से हमने लीजिंग प्रोग्राम शुरू किया है, दे आर मेकिंग 10-12,000 पर मंथ। वो कहते हैं यार हमें $300 ठीक है पड़ रहा है, लेकिन कॉस्ट है ना। तो मैं ये नहीं चाहूंगा, या हमारी कंपनी ये नहीं चाहती कि आप पे ये $300 का बोझ बन जाए। लेकिन लास्ट थिंग मुझे आपसे ये चाहिए कि आपको एक चीज में लेके आए, चलें आपने अपफ्रंट नहीं देने, लेकिन 2-3-4 माह बाद आप मार्केट से एटलीस्ट इतने उठा लें कि इसका भी खर्चा उठा लें और साथ अपने घर की भी कुछ बना लें। तो ये है, तो इसको अपने आप को क्लियर विजन के साथ 3 माह दें। ओके, अब मुझे ट्रेनिंग मुझे स्टार्ट करनी है आपको। हाँ जी, उसकी मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? $300। $300। तो मैं आपको साइन अप करवाऊंगा। सबसे पहले पैसों से पहले एक लैपटॉप चाहिए, जी। उसके अंदर iCore 7 चाहिए, उसके अंदर 16 गिग की रैम चाहिए। ये मिल जाती है मैजिक कंप्यूटर से यहाँ $450-500 की। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मैं आपको एक ऑफिस में भेजूंगा, वो ट्रिनिटी है, यहाँ से 10 मिनट दूर है। आप जाएंगे, असिस्टेंट्स के साथ बैठेंगे, वो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपको कुछ वीडियो दी जाएंगे कि भाईजान ऑफिस में बैठ के देखें, घर में बैठ के देखें, किसी बीच पे बैठ के देखें, देखनी है आपने। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए टिक क्या है। एक छोटी, मैंने इतना बेसिक बनाया हुआ है पूरा सिस्टम। टिक क्या होता है, जब मैं ES का वर्ड करूंगा तो क्या मतलब होता है। अगर मैं डाइवर्ज, अब जो आखिरी सबसे बड़ा टॉपिक होता है, वो कहते हैं ना कि लेवल्स होते हैं एजुकेशन में भी, तो 5वीं वीडियो में जब आपको RSI या डाइवर्जेंस के बारे में बताओगा, तो अब वहां आपका नॉलेज कोई भी कर सकता है। हमारे पास ओल्डेस्ट फेलो, यंगेस्ट फेलो 18 है, क्योंकि 18 मिनिमम चाहिए, और ओल्डेस्ट फेलो 76 है। तो एज इज नॉट ए प्रॉब्लम। सिर्फ आप देखिए, नहीं समझ आती, हमारे साथ मेंटोर्स बैठे हुए हैं, आप ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं वो तो, लेकिन इनरोल होना पड़ेगा। लेकिन पहले इनको पता तो होना चाहिए अब बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर हमेशा मैं ये क्वेश्चन, लोग कहते हैं यार कि ये क्या, मैं क्या, आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे ना, आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपने क्वेश्चन क्या पूछने हैं। आपको ये ही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है मेरे। तो ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने आप को एटलीस्ट जो पॉइंट मैं तो बगैर नहीं सोचे, बगैर डेटा देखे, सारा सिर्फ उसका ग्राफ देख के ना, ग्रीन और रेड 2 पॉइंट में आराम से रात को पता किया था। सर राती मैं सुता नहीं, मैं बैठा सी, मैं फिर ES ने भी देखा, ट्रेड नहीं ला सकिया, लेकिन कम कर रहा सी। लेकिन वो जो मैं अपनी कैलकुलेशन का हाँ 10 पॉइंट 11 पॉइंट थले बाय पे लाती 7 पॉइंट मेरे को मार देने में, मैंने 17 पॉइंट 15 या एंटर हो गए। वो एंटर हुई है, फिर ले आएगी 2 पॉइंट तो वापस काट के वापस गए। वेरी नाइस। मन काट देता ना। अच्छा स्टॉप लॉस ला, ठीक है, स्टॉप लॉस जरूरी होता है जी। फिर मैं सुबह 4 बजे फिर मैं 2 दी माइक्रो फिर वो फिर उन्हें किया, मैंने थोड़ा ना थल्ले आई फिर पहुंच गए। इस बार में पूरे कितने जाते हैं? एक NASDAQ बताया आपने, और S&P 500 US की जो 500 कंपनी है, उनका इंडेक्स की वैल्यू होती है। तो ओके, ठीक हो गया। तो करें आपसे, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। तो अब ये है कि मैं अली भाई से सारा करके फिर हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तो आ जाओ। मेरा ले गया दोनों दे अच्छा ए बंदे दी नहीं नहीं असल होया गया, ਤੁਸੀਂ बैठे सी इधर राइट,
ਤੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ और लेकिन आइडेंटिकल बैग है। हम लॉन्ग टर्म चलेंगे, बैग भी सेम, बिजनेस भी आईपी वाला सेम। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। सो इसमें व्हाट्सएप कर लें और सिर्फ लिख दें कि रेफरेंस विद अली भाई, आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व देन। ओके, ठीक हो गया। तो अली फिर आप बैठे, मैं चलूं? हाँ ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह फोन पे बात होती है। ओके ओके सर, राफी साहब थैंक यू। ठीक है, उनको बस बता दीजिएगा कि आपको ओरिएंटेशन मिल गई है, तो नो प्रॉब्लम। लो जी बाबू जी, क्लिक करो। अच्छा जी, ठीक है जी। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 428 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਡਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ 428.50, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ $342, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। 20% ਕਿ 10%? ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 442 ਚ 20% ਸਪਲਿਟ ਹੈ, ਹਾਂ 20%। ਸਬਮਿਟ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਫਰੀ ਦਾ। ਆਈਡੀ ਸ਼ਾਈਡੀ ਹੈ ਨਾ? ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿਹੜੀ। ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਐਡ ਸਰ ਮਨੀ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਡ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। हाँ जी, अगला स्टेप कर लो। चलें ले लें यार, चेक कर। हाँ, कोई कह रहे पासवर्ड बना लें, क्रिएट योर पासवर्ड, कोई बना लो। एक और मिड बैंड चल गया जी। कोई बात नहीं। Thank you so much, sir ji. No problem. हाँ, चलते रहो। अच्छा जी, अगे देखो, कहता सेव करो इस पासवर्ड को, ठीक है। कहता अपना जो लीगल ड्राइवर लाइसेंस है यही नाम है। ठीक है, पूरा ही इत्थे भी अली, इत्थे भी अली। फुल लीगल नेम नहीं है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम ए हकम है, फिर फुल लीगल लास्ट नेम। हाँ जी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पाओ तो फोन नंबर पाओ। हेलो, मैं उससे बैठा है राफे भाई वो नहीं, ये है। हाँ जी, ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है,
जी ड्राइविंग लाइसेंस पे मेरा नाम है हाकम अली फर्स्ट नेम है, अहमद अली लास्ट नेम है। ठीक फोन नंबर पे आ रहे थोड़ा जा साइड बैठो बैठो नहीं मैंने सर नहीं नहीं मैं बैठना नहीं है मतलब रास्ता कट रहे हैं बैठो बैठो ताकि मैं इजीली हूं आओ बैठो हाँ बैठो बैठो नेक्स्ट करो हाँ कंटिन्यू करो हूं लिखो अपना एड्रेस पाओ वाइस और वाइस भाई गुड आप ही की स्क्रीन में बैठा हुआ था। अच्छा नो प्रॉब्लम सॉरी आपका मॉनिटर एक स्टील किया है हाँ क्योंकि उसको आपको जरूरत नहीं थी तब मैंने कहा क्या मुझे नहीं जरूरत। you look nice man When you're done after you stream, we'll talk. Right? okay मैं ऑन किया। no problem अभी मैं बैठूं? हाँ हाँ मैं उनको सेट कर रहा हूँ Whenever you're done, just 5-10 minutes. no problem कंट्री ऑलरेडी हो गया ठीक है नेक्स्ट करो Occupation. ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दो पे आउट ला रहे हैं ना जी माशाल्लाह भाई ऑक्यूपेशन लिखो क्लिक करो की कर दे रहे हो पहले हाँ चलो लॉजिस्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ चले जाओ रेजिडेंशियल भाई माशाल्लाह स्किल ट्रेड हाँ ट्रांसपोर्टेशन सॉरी कार वैन ड्राइवर क्रेडिट कार्ड देना अपना हाँ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ $30 ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ $398 dropping big time
All right, guys, 12:12. So I'm gonna call it a day. So I think it's good enough. So watch out for interest rates. I can go and do some work. Plans for FOMC R4 S4. That's it. Wait. S2 तो done हो गई है, S3 की तरफ तो जा रही है. So S4 R4, as far away as possible. Yes. You pay with this card, you post the card. हाँ ठीक है कोई बात कैश एडवांस भी नो प्रॉब्लम जय जी कोड डालें Junaid Harneet just to he's done two still holding a stream Okay. ठीक है आगे -41 जी ठीक है जी जाएं कंफर्म करें पे $30.81 ठीक है दे माउस दीजिएगा ताकि वो आपका यूज कर लो paying receiving salary जब आपको सैलरी आएगी ना उधर से स्कैन QR कोड ठीक है अच्छा वही वाला KYC जो हमने किया था ना सुपर एरिया उधर करें अपनी इसकी फोटो लें मेरी फोटो लेके एक लिंक खोलो नहीं खोलो बस हाँ कनाडा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ड्राइवर लाइसेंस पे है ठीक है ले आओ
हाँ बस मैं अभी बस लाइव 5 मिनट में करता हूँ। बैठे 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 ओहो नहीं कुछ भी नहीं, हम गुड। All right, see you guys. Enjoy.